Very good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग? So I could see the lot of participants, students have joined the course, joined the discussion, and it is really nice to see all of you. So let me start. The today topic is, what is the topic? Some of the participants I could be able to see that they have already taken the classes. If I could recall the name properly. एंड अदरवाइज सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी स्टार्ट कीजिए। मुझे पहले टॉपिक का नाम बताइए कि टॉपिक कौन सा है आज। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के नाम से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट वर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनपुट टैक्स क्रेडिट? नाइस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट? व्हाट इज दैट? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या चीज है? Before starting the topic, you all have to tell me what do you understand by this term input tax credit. My humble request to all, ki whenever I'm asking the question, kindly give the reply. You might be the new student, you might be joining the class first time with me, but मेरा थोड़ा सा तरीका probably अलग होगा, but I request everyone to participate with me to give the reply. ITC, ये input tax credit क्या चीज है? What do you understand by the word input tax credit? What do you understand by the word input tax credit? You all, whatever you know, please give in the chat. What do you understand by the term input tax credit? So I got to reply the input tax credit set of the GST paid to the government. Oh, great. ITC received my tax, which is paid earlier by me as a supplier. Okay, on which we will claim the tax on purchase. Very nice. Tax paying today, benefit in future. Very nice. Input tax we are able to purchase of things. Very nice. Lot of reply I have received. Thank you so much first. And let me start the topic. The name of the topic is absolutely correct. Input tax credit. What is the word input tax credit? If I try to understand from the layman language, Mr. A is a supplier and he sold the goods to Mr. B. He is a recipient. You can say he is a buyer. He can say whatever you like to use the word. Then suppose that value is 10,000 rupees and the GST is 500 rupees. The total invoice which A is raising to B is 10,500. B is paying rupees 10,500 to A. A will pay 500 to government. Correct? And he will keep 10,000 with him. So this extra 500 on account of the taxes which B is paying, he will take the benefit. The benefit could be in terms of offsetting with the tax liability, tax liability of Mr. A, of Mr. B, or sometimes it can be refund also. Very like export, you will understand at a later stage that when you are doing the export, you are entitled to take the refund. That we will discuss later on. Not if it is not in the inter, then it will be in the final. But what is the benefit going to accrue to Mr. B? He can take the ITC first, and the use of the ITC would be to offset against the future tax liability, or sometime government allow the refund as well. So एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं. You are Mr. A, I am Mr. B. You are making the sale to me. It can be goods, it can be services. You are raising the tax invoice to me of rupees 10,000 plus GST 500 rupees. I am making the payment to you. I am making the payment to you 10,500. I will take 500 ka benefit in terms of ITC. What is the use of ITC? ITC can be offsetted with my tax liability. It means
B will also make the sale, right? Whatever the tax liability arise on the sale, he can use this 500. First point. Second point, in some cases like export, government allow me to take the refund. So I can file my refund application and take the refund of this 500, subject to terms, condition, whatever it is being mentioned. Coming back, see, when I am making the payment to you 10,500, will you keep entire 10,500 with you? Answer is no. You will keep 10,000 with you and 500 you will pay to the government. 500 you will pay to the government. Then this 500 which you paid, you will also file some return. I will also file some return. So this is basic understanding of input tax credit. This is basic understanding of input tax credit. Is it clear to all? Is it clear to all for the time being? So let me discuss certain point with all of you. Some basic understanding we all need to understand. Then I can move to the topic. So पहले मुझे कंफर्म कीजिए कि जो अभी हमने डिस्कस किया, is it clear to all? Then we'll move to some more point. I am trying to develop some base, and then we can start our topic. I cannot jump directly to the section, whatever the section 16, 17, 18, I cannot directly jump. I have to develop some base, clarity on the base, and then we can start. We have the good time, no problem. ठीक है. So you all are saying clear. So रिया गोस्वामी, नो प्रॉब्लम बेटा. मैं रिपीट कर देता हूँ. आप सप्लायर है, मैं आपका कस्टमर हूँ. आपने you have paid rupees, you have raised the invoice to me for 10,000 rupees. You will charge the GST? Yes. Let's say you charge 500 rupees. So the invoice will be 10,500. I will pay you 10,500. Whatever the invoice contain, 10,000 plus 500, I will take the benefit of the 500. This 500 का benefit I will term as input tax credit. इसका यूज क्या है? इस 500 रुपए का यूज क्या है? या तो मैं अपनी फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज कर लूंगा, या मैं इसको कुछ सिचुएशन में, जैसे एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट बोलते हैं मैं आपको रिफंड भी दे दूंगी. सो दीज आर द बेनिफिट. ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. सब लोग साथ रहिएगा, काफी मजा आएगा डिस्कशन करने में. और अब बताओ ये क्या है एफसीएम वर्सेस आरसीएम? एनीवन नोज व्हाट इज दिस एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज? लेट मी राइट द फुल फॉर्म. I'm not talking about the full form here. No, I'm not expecting from you to give me the answer as a full form. No, I mean what is the concept of forward charge and what is the concept of reverse charge? What is the concept of forward charge and what is the concept of reverse charge? What is the concept of the forward charge and what is the concept of the reverse charge? What is the concept of the forward charge? What is the concept of the reverse charge? Mayur, that all permutation combination we will discuss. 16 subsection 2 imposing initially 4, then 5, then now 6 condition are there. We will discuss one by one. So you are absolutely correct. That condition I will talk about later point of time. Trying to develop some basic point with all of you. I have received a lot of reply thanking each one of you. So active, yeah. Really, we really very happy. Being a teacher, I really happy to see all your active reply. Maza aa gaya, sach mein. Now, what is the concept of the forward charge and what is the concept of reverse charge? The concept of forward charge means supplier A raising the invoice to be for the value of the goods or services 10,000, correct? He will also charge GST on that invoice. Point number 1. In case of the reverse charge,
He will raise invoice only for the value. GST he will not raise. Point number one. Point number two, in case of the forward charge, the B will make the payment to A will make the payment to the government. So the taxes in case of the forward charge, who will pay to the government? If the supplier will pay to the government in case of the forward charge. What about in case of the reverse charge? B will directly pay rupees 500. Why, whatever the GST, the B, who is B? B is the recipient. He will directly pay to the government rupees 500. In case of the reverse charge, B will not make the payment of the taxes to A. B will make the payment of the taxes directly to the government. तभी तो इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं. रिवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट, उल्टा. उल्टा मीन्स normally in the normal charge or forward charge, supplier will pay the taxes to the government. Obviously, it will be collected from customer only. Indirect tax is, it means it is collecting from customer and making the payment to the government. But in case of the reverse charge, the recipient directly make the payment to the supplier. No, directly make the payment to the government. This is reverse charge. In case of the reverse charge, obviously, if B pay the taxes to the government, obviously he will be entitled to take the benefit, and again the benefit will be called as ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहां पर मैं रिपीट करता हूं वापस, क्या होता है रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज का मतलब अपोजिट. अपोजिट किसका? नॉर्मल चार्ज का अपोजिट. क्या मतलब हुआ कि जब नॉर्मल चार्ज में, वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ द नॉर्मल चार्ज, A is raising the invoice by charging the GST. B is making the payment to the supplier including taxes. A will make the payment to the government. But what happened in the reverse charge? B will directly pay the taxes to the government, and that is called reverse charge. And obviously, whether the taxes is being paid by the recipient either under forward charge or under reverse charge, in both the cases, Mr. B, recipient, entitled to take ITC. Confirm. Is it clear? Example of the reverse charge, it can be transportation, it can be legal services. Multiple examples are there. So you will discuss in the respective chapter, or you might have already discussed. ठीक है, बट मेरा पॉइंट क्या है, ट्राई समझिए. रिवर्स चार्ज के केस में टैक्स डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, एंड ITC will also admissible to the recipient. That is the 2 point which I like to highlight. Forward charge and reverse charge, ITC. So एक बार quickly confirm करें. I hope it is clear. If it's still not clear, kindly confirm. I will repeat. Are you getting my point? See, forward का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड मतलब नॉर्मल तरीका. मैं सप्लायर, आप सप्लायर, सॉरी मैं चेंज नहीं करूंगा, वी विल क्रिएट द कंफ्यूजन. यू आर द सप्लायर, आई एम योर कस्टमर, यू आर रेजिंग द इनवॉइस एंड यू आर चार्जिंग द GST. Correct na? And in case of the reverse charge, you will not charge the GST. I myself will calculate and pay directly to the government. This is reverse. Reverse का मतलब क्या है, हमेशा याद रखना. उल्टा. उल्टा मतलब क्या? टैक्स के रिगार्ड में. यहां तक क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप मुझे बार बार कंफर्म करते रहना या बार बार क्वेश्चन पूछते रहना. टू थिंग यू नीड टू डू, either confirmation or just raise the question, whatever you have. I will try my best to give the reply. Abhi aate hain. Let me further. Now you tell me based on your understanding, what do you think that, say, if A is making the supply to B and B is unregistered, do you think that whether B can take the input tax credit? B is unregistered in the GST. Do you think that B can take the credit? B can take the credit. Do you think that B can take the credit ITC? इसको बेनिफिट मिलेगा?
हाँ बेटा, फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है। और एक मुझे मनीष ने कहा, व्हाट हैपन टू एज आईटीसी ऑन द परचेज, हाउ वी विल एडजस्ट। मनीष वेट कीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है, बट जस्ट मैं एक बात कह सकता हूँ मनीष, एक को लॉस हो जाएगा आईटीसी का। अभी मैं बाकी सभी को आंसर नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग द आंसर टू द मनीष बिकॉज ही हैज आस्क्ड द एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। व्हेन यू रीड द 17 सबसेक्शन 3, we will go into detail, but when you read the 17 subsection 3, A will not be entitled to take ITC। A को नुकसान हो जाएगा आईटीसी का। तनिष्का एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा कि बी को आईटीसी मिल जाएगा। और मयूर एक बार कंफर्म करना, मैंने हिंदी में रिपीट कर दिया था, क्लियर है ना? हाँ, सोशल फॉरवर्ड चार्ज का मतलब टैक्स व्हिच इज पेबल बाय द सप्लायर, बट इन केस ऑफ द सप्लायर विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एट एब्सोल्यूट बी कैन टेक बी कांट नो 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 एफसीए मींस टैक्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। How will not get the, how he will not get the credit? Mayur, A will not get the credit। ठीक है, फाइन। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, अभी आपने एक आंसर तो सही किया, तो अब देखिए, अब देखिए, अगर मैं इनपुट टैक्स की डेफिनेशन देखता हूं तो ये यहां से इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन, डू यू एग्री विद मी ना कि यहाँ पे वर्ड रजिस्टर्ड पर्सन क्यों लिखा? अभी तो आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उसे आईटीसी किस बात की। इसीलिए जो वर्ड इनपुट टैक्स की डेफिनेशन है वो स्टार्ट कहां से होती है? इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन। इट कैन नॉट बी अनरजिस्टर्ड बिकॉज इफ द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, हाउ एंड व्हाई ही विल बी एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। ठीक है, अभी आपने देखो, अभी हमने दो तीन बातें की है। एक बात आपने कही कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट टेक द आईटीसी, एम आई राइट? सो you can double check that because of this reason the word registered person is there. Second point, you also told me few time back, few minutes back, that whether B pay the tax under forward charge or B pay the tax under reverse charge, he would be entitled to take ITC. You have confirmed me, right? How to read this. Now, this is, so I am highlighting certain part. This is forward charge. This is forward charge and this is reverse charge. Let me repeat once again. I'm just changing. This is reverse charge and this is forward charge. Try to understand the difference. Try to understand the meaning. Input tax in relation to registered person means the CGST, SGST, IGST, UTGST charged on any supply. चार्जिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज। इट मींस आई दिस इनपुट टैक्स का डेफिनेशन यू ऑल नीड टू रीड इन बीज पर्सपेक्टिव। यू ट्राई टू रीड दिस कि दैट यू आर मिस्टर बी, यू आर द रिसिपिएंट। नाउ लेट आई एम बी एंड आई एम रीडिंग इन माय ओन लैंग्वेज। ये कहता है कि इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन, सो आई एम रजिस्टर्ड, यस, सैटिस्फाइंग। It means it can be CGST, SGST, ITGST, IGST, UTGST, whatever the GST is being charged. चार्ज का मतलब क्या हुआ? जो मुझे इनवॉइस मिला उसके ऊपर जीएसटी लगाया है। जो मुझे इनवॉइस मिला उसके ऊपर जीएसटी है, इसका मतलब ही तो चार्ज हुआ ना, चार्ज। ठीक है, मेड टू हिम मतलब मुझे जो इनवॉइस दिया उसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया है, करेक्ट? सो इट मींस इट इज फॉरवर्ड चार्ज एंड दे आर सेइंग इट इंक्लूड्स RCM। We have just now completed the RCM का ITC भी मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ है? The tax payable under 5 subsection 3, 5 subsection 4, 9 subsection 3, 9 subsection 4. Only the section का number is. If you read the CGST Act, you will find the provision of the RCM is governed 9394. If you read the IGST Act, RCM का provision is being given in 5354. If you read SGST Act, you will find the same section. If you will read UTGST Act, you will find different section, but the concept remains same. You will find here also GTA, you will find here also GTA. यहाँ पे भी आपको GTA मिलेगा, यहाँ पे भी आपको GTA मिलेगा। Coming back to the point, हमने अभी बात की
कि Mr. B will be entitled to take the ITC of forward charge or reverse charge. Where it is being written? If you read this, tax charged on any supply made to him. मतलब मुझे जो सप्लाई की गई है, whatever the supply is being made by the supplier to me, he is charging the tax. It means it is forward charge. Plus, it include RCM in which I am paying the tax directly to the government. Sir, which section it is written? It is written in the 9 subsection 3 and 9 subsection 4 of the CGST Act. कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, खाली सेक्शन नंबर अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं, इफ आई एम इंपोर्टिंग द गुड्स, आई एम पेइंग आईजीएसटी एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस, इट इज नॉट आरसीएम, it is not RCM, it is not RCM, but yes, I would be entitled to take ITC. तो अभी हमने क्या बात की, मुझे किस किस का ITC मिलेगा, एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट, जो सप्लायर ने मुझे टैक्स इनवॉइस दिया है जिसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज किया है। सेकंड, I am paying tax directly to the government by virtue of the reverse charge. What is the section number? 9394. Only remember this section number, CGST का 9394. Third, if I am paying the tax directly at the time of import of the goods. Custom के time पर मैं जब bill of entry file करता हूँ, I am paying the tax at that point of time. Correct? So whatever the taxes I am paying at that point of time, क्या transaction है? Import of the goods. Then I would be entitled to take ITC. Last, composition dealer, whatever he pays the taxes, he cannot take the ITC. So now let me share the screen once again, whiteboard. एक बार just wait कीजिए, allow me 2 minutes, let me complete and then you can ask your question. So first thing is clear, for taking the ITC, the recipient should be registered person. Okay. Second point, we have understood that ITC can be of the forward charge plus can be of the reverse charge. Where it is written? It is written in the section. To section 63 and to section 62, we have discussed two sections. RCM, it can be covered in the 9.3 or 9.4 of CGST Act. The numbering or section numbering would be changed when you read IGST, when you read UTGST or when you read SGST, but the concept remains same कि आपको RCM का ITC मिलेगा, FCM का ITC मिलेगा, और एक और ट्रांजेक्शन था जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका ITC भी मिल जाएगा. So what is the input tax? Input tax means forward charge plus RCM plus import of goods. You should be registered at the time of receiving, and then who cannot take the ITC? Who cannot take the ITC? I can say composition dealer cannot take the ITC even if he is registered. But composition में हम ITC मना करते हैं. You cannot take the ITC. So please confirm the definition of ITC is clear to all of you. ITC means input tax credit, means credit of input tax, and the word input tax has been defined. You are right. Someone has given the section number. Absolutely correct. अभी तक क्लियर हुआ या कुछ कंफ्यूजन है? So if I am composition dealer, ठीक है. So Bhavika, let me repeat once again. If I am composition dealer, whether I am paying the actual tax to the government, you all please answer. If I am composition dealer, then whenever I make the sale, will I pay the actual tax or some predefined percentage like 1%, 5%, 6%? Will I pay the actual tax? Mr. V, I cannot say what is the page number of institute material, but yes, it is there. क्या page number मुझे नहीं मालूम. Please confirm. Yes, I saw. This is 2 section 63 and 2 section 62. चलो बात करते हैं. See, what is the composition dealer? So someone has raised a question. 2-3 questions are there in respect to the composition.
See, when your turnover exceed the threshold limit, whenever your turnover exceed the threshold limit, it can be 20 lakhs, it can be 40 lakhs, it can be multiple turnover, 10 lakhs, whatever. When your turnover cross the threshold limit, then you need to take a registration. At the time of registration, you have the multiple category, correct? So meanwhile, one is the normal regular category. One is the composition category. I'm not talking about any other category. I'm talking about only two category. So जब मुझे registration लेना है, तब मैं registration या तो regular category में ले सकता हूँ या composition category में ले सकता हूँ. I am for the time being, because today topic is not the registration. Therefore, I am taking only small point for giving the clarity. So अब मेरी turnover तो cross हो गई. My turnover is cross the threshold limit. Threshold means 10 lakh, 20 lakh, 40 lakh, whatever. Now I need to register in the GST. Then government is giving the option that you can register under the regular category or you can register under the composition category. So what is the difference? Composition basically is given to the small taxpayer. It is given to the small taxpayer. Means there is upper limit that your turnover should not exceed 1.5 crore. Should not exceed. It means I can go for composition till 1.5 crore. Sometime this limit is 75 lakhs and sometime this limit is 50 lakhs. So I am not reading in which category the limit is. But मेरा पहला point समझिएगा, composition किसको ऑफर किया जाता है? Composition ऑफर किया जाता है small taxpayer को. Small taxpayer को. इसकी अपर लिमिट फिक्स कर दी कि इससे एक्सीड नहीं कर सकती इसकी टर्नओवर. There are certain restriction. क्या restriction है? We'll talk. 1 or 2 we will talk. But first try to understand when my turnover cross the threshold limit. ठीक है, मुझे GST में नंबर लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है. So government is saying go for regular or go for composition. What is the difference? First difference I told you that there is no upper limit in regular category of registration. No upper limit of turnover, but in small category के लिए है, इसके लिए इसकी upper limit रखी है. Here I will pay, supplier will pay the actual tax rate, but here they will pay only 1% or some cases 5% or some cases 6%. Again, there are certain category, but if you are supplying the goods, then normally it is 1%. Restaurant, they are saying 5% and 6% there is a service. मैं बात करता हूं, I'm only highlighting 2-3 points to all of you. In the composition, government is saying take no problem, but your limit should not cross up to 1.5 crore or more than 75 lakh or more than 50 lakh. Different. There are three, I can say slab. There are three categories. In the three categories, second benefit, what is the biggest advantage? They have to pay only small rate of the taxes. Only small rate of the taxes. But here, I will pay actual tax rate. Supplier can collect the tax from government, from customer. And he cannot collect tax from customer. Try to understand. Third difference I'm talking about. See, if I am supplier, I will raise the invoice to you by charging the GST, whatever we have discussed in the forward charge. But in case of the composition, there is a restriction that I cannot collect the tax from customer. It means whatever the rate of taxes are there on my sale, I have to pay from my own pocket. It is the cost to me. Why cost? Because I cannot collect the tax from customer. Because the rate are very small. So they are saying, because we are collecting, government is saying, we are collecting very small amount of
taxes from you. So I will not give the any benefit of purchase, GST paid on purchase. Here, supplier is paying actual tax, so ITC is allowed. ठीक है, अभी हम वापस रिवाइज करते हैं एक बार। एक बार बात करते हैं, वापस बात करते हैं। यू ट्राई टू गिव द रिप्लाई वट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू। राइट राइट, वट एवर द क्वेश्चन। सो whether composition dealer is registered in the GST, yes or no? Whether composition dealer is registered in the GST, yes or no? Just answer yes or no. Composition means registered in the GST or not? You try to give me the answer of some of the question, and then you will have the comparatively more clarity on the discussion. Yes, yes, Anmol. He is registered in the GST. Point number one, absolutely correct. Composition dealer, who, whether composition dealer is having the upper threshold limit or not. Upper threshold limit or not. Composition dealer की कोई upper limit होती है नहीं. Whether composition dealer has upper threshold limit or not. क्या composition dealer की कोई upper threshold limit होती है? Yes, yes. क्या upper threshold limit is? Yes. You give me the answer. This is the new question I have not told you. What happened if I have taken the registration under composition and my turnover cross 1.5 crore? What happened after that? What happened after that? I am registered in the composition. My turnover cross 1.5 crore. What happened after that? क्या होगा? मेरी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गई तो क्या होगा? You tell me, if my turnover exceed 1.5 crore, then what happened? Unregistered, registered, regular category, penalty. What happened? What happened? What will happen after that? See, my turnover crossed the threshold limit of 1.5 crore. Then what do you think? क्या होना चाहिए मेरे साथ? Yes. If my turnover crossed the threshold limit, can I continue under the composition? No, I cannot continue under the composition. I have to switch. Switch matlab from the composition to regular category. From composition to regular category, I will switch myself. I will switch myself from one category to the another category. In the regular category, whether he is paying actual tax rate or 1%, 5%, 6%. If I am registered under the regular category, will I pay the actual tax rate or predefined percentage 156? अगर मैं रेगुलर कैटेगरी में रजिस्टर्ड हूं तो मैं गवर्नमेंट को एक्चुअल टैक्स पे करूंगा या 156 व्हाटएवर प्री डिफाइंड परसेंटेज? Soma Bhanuji, Miss Soma Bhanu, automatically you will not be considered. I need to file one form. ठीक है? Yes, absolutely correct. He will be out of the scheme and actual tax rate. If I am registered under regular category, I will pay the actual tax rate or predefined percentage. The answer is actual tax rate. You tell me with respect to ITC, in which category ITC is allowed, in which category ITC is not allowed. In which category ITC is allowed, in which category ITC not allowed. You all are requested to give the reply. I am trying to develop your base. Once base would be completed, we are very comfortable to start our chapter ITC. Yes, Jyoti. Yes, Jyoti. अगर मैं रजिस्टर्ड हूं रेगुलर कैटेगरी में तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स नॉर्मल एक्चुअल टैक्स दूंगा
Who, now you tell me, who is entitled to take ITC and which one is not entitled to take ITC? Correct. Regular taxpayer will get the ITC and composition dealer will not get the ITC. Composition dealer will not get the ITC. Fine. Last question to all of you. Last question to all of you. We have discussed three categories. मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को. Let me change the question. Who cannot collect the tax from the customer? Who cannot collect the GST from the customer and he has to pay, that registered person has to pay the GST from his own pocket. Who cannot collect the tax from the customer and he has to pay the GST from his own pocket? Which category are not entitled to collect the tax from the customer and he has to pay from his own pocket? So we are clear till now. Till now we are clear कि भाई अभी हमें कंपोजिशन और रेगुलर तो समझ में आ गए. ठीक है. Now we have discussed bucket. We have discussed three bucket of we have discussed three bucket कि ITC का मतलब क्या होता है. ITC means this one plus this one plus this one. Kindly fill my bucket. Kindly fill my bucket. When I told you the definition of the ITC, ITC means registered person, blah 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 blah. And then I told you three component. Please give me the answer. What is to be entered, what is to be filled in my bucket. मेरी बकेट खाली है, आपको भरना है. किस चीज से भरना है? आईटीसी की डेफिनेशन से. यू हैव टू टेल मी द आईटीसी का डेफिनेशन इन वेरी कॉन्क्रीट मैनर. क्या मतलब है आईटीसी का? वेरी नाइस यार. Very nice, very nice. Thank you, each and every participant, for giving the accurate reply. So first, I can say that ITC means forward charge mechanism. Then again, it will be RCM also. And third is import of goods. Never mix RCM and import of the goods. Please keep separate. Please keep separate. Never mix the RCM and import of the goods. You don't think that import of the goods is also RCM. No. If you read the definition, you will find the difference. RCM अलग है, import of the goods अलग है. ठीक है. और किसको who will not get the ITC? Who will not get the ITC? Composition. Who will not get the ITC? Composition. Now let's move further. Let's move further.
यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क मी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क मी, एल्स कंफर्म दैट इट इज क्लियर टिल नाउ। एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज आस्क। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क मी और कंफर्म मी। कंपोज पूजा, ये गलत हो जाएगा अगर आपने वर्ड यूआईएन कर दिया ना, तो गलत हो जाएगा। If you will add the word UIN, it will be the mistake, because in case of the UIN, government is giving the refund। जितना भी उनका टैक्स है वो उनको रिफंड मिलता है। आईटीसी से क्या, उनको तो बहुत बेनिफिट है। यूआईएन कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन एक अलग होता है, उसमें तो रिफंड है। तो प्लीज डू नॉट ऐड द वर्ड यूआईएन विद द कंपोजिशन। Mayur, if under RCM the recipient is unregistered and then he cannot take ITC. See, Mayur, that is again a different discussion. But if a recipient is unregistered and RCM is applicable, then registration ka section 24 clause 3 says the recipient has to take mandatory registration. He cannot be unregistered. If RCM is applicable, recipient cannot be unregistered. If he is unregistered, then section 24 ka clause 3 says, right, registration le pehle. So, Sweetie Kumari, import of service is covered under reverse charge. Recipient has to pay that tax under reverse charge, and it is covered in the 5 subsection 3 or 5 subsection 4 of IGST Act. So it is covered in this bucket RCM. Should exceed the basic exemption limit, collect the tax from customer, take the benefit. ठीक है बेटा, सुशील ठीक है। In case of the import of FCM is charged. नहीं नहीं नीलम, नीलम मैं क्या कह रहा हूँ, नीलम, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स में भी रिसिपिएंट टैक्स पे करता है एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस। देखो एक बात बताओ, मैं गुड्स बाहर से परचेस कर रहा हूँ, तभी तो इंपोर्ट हुआ ना। अब बाहर वाला जीएसटी थोड़ी पे करेगा इंडिया का। ही वुड बी लिस्ट बोथ आर अबाउट टू पे द जीएसटी इन इंडिया ना। सो द लाइबिलिटी इज ऑन मी, द लाइबिलिटी इज ऑन मी, बट प्लीज डू नॉट यूज द वर्ड आरसीएम फॉर इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। क्योंकि जब आप जीएसटी में आरसीएम का डेफिनेशन देखोगे ना, इट इज ओनली कवरिंग 9394 5354 समथिंग, ठीक है। जैसे होता ना, आप सही लिख रहे हैं बट एग्जाम में गलत हो जाएगा। अगर आपने आरसीएम और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स को एक ही वर्ड लिख दिया ना, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वैभव, व्हाट इज द पॉइंट इन पेइंग द जीएसटी टू द गवर्नमेंट एंड क्लेमिंग द आईटीसी बाय मिस्टर बी इन आरसीएम? सी वैभव, आईटीसी तो हर किसी केस में, मतलब कुछ ऐसी हो सकती है रेस्ट्रिक्शन हो। लेट्स से कि मैं कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं, देन आई कैन नॉट टेक द आईटीसी, करेक्ट। सेकंड, concept of reverse charge would always be to regulate that particular sector. See, if I am transporter, let's say Vaibhav has asked very good question. Try to understand why RCM and why ITC. See, suppose there could be the multiple reason for imposing the RCM. One reason I'm telling to you so that you have the basic clarity. अगर मैं GTM ट्रांसपोर्टर हूं, I would be not too much educated, but I'm doing the business, but मुझे इतना एजुकेशन नहीं है, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हूं। बट सो द गवर्नमेंट आर नॉट इन द पोजिशन टू इम्पोज सर्टेन लाइबिलिटी ऑन मी of registration. So the compliances would not be possible because I'm not so much educated. So the responsibility to pay and everything will be shifted to the recipient. He will pay the tax under RCM. He will not pay the tax under RCM. Will he take the ITC? Not take the ITC? Depend upon multiple situations. But mainly, I can say, if recipient is paying tax, he will be entitled to take ITC, no problem. But government like to understand. Government like to regulate the market. That is the reason. ममता आप पूछ लीजिए, जो भी डाउट है ना पूछ लीजिए, कोई नहीं। Got it, sir. In tax GST we can write definition in our own word. हाँ, सेक्शन का नंबर मत डेफिनेटली आप लिख सकते हो। ममता, कंपोजिशन के लिए स्मॉल बिजनेस में मन बिजनेसमैन के लिए होता है तो वो ऑप्ट कर सकता है व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 75 लाख। ममता देखो, मैंने कंपोजिशन ले लिया एंड वंस, सो
when I am taking the registration, I have to select under which category I am going. So let's say I have selected composition. And once my turnover exceed whatever the threshold limit is there, 75 lakhs, 50 lakhs, 1.5 crore, different categories के लिए अलग अलग है. So I have to fill one form and I need to convert my number to the regular category. गजेंद्र तिवाड़ी, फिर है ना ये चैप्टर अलग हो जाएगा. आपका क्वेश्चन का आंसर एग्जेम्पशन है, सीरियल नंबर 21 कैपिटल ए, बट वो चैप्टर अलग हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, बिकॉज हमारा मेन चैप्टर आईटी से वो छूट रहा है और हम कहीं और चैप्टर में जा रहे हैं. कुछ ले जाना जरूरी था, बट आई कैन नॉट कंप्लीट एवरीथिंग ऑफ अदर चैप्टर्स. ठीक है, अब एक बार आते हैं. हाँ प्रशांत, आपका कमेंट पहली बार ही दिखा है मुझे. आई एम एबल टू सी द फर्स्ट टाइम ओनली, नॉट प्रायर टू दैट. गजेंद्र एग्जामिशन है. नागार्जुन, नागराजू जी, इफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज नॉट आरसीएम देन नोटिफिकेशन 10 बाय यूजुअली आरसीएम कवर्ड अंडर 13. नहीं 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 नागाराजू, यू आर टॉकिंग अबाउट 13 का नोटिफिकेशन फॉर 9(3). यू आर टॉकिंग अबाउट सीजीएसटी एक्ट. सीजीएसटी एक्ट के लिए 9 सबसेक्शन 3 है और उसके लिए नोटिफिकेशन 13 बाय 2017 है. अगर मैं 5 सबसेक्शन 3 की बात करूं इंपोर्ट की केस में, आईजीएसटी के केस में, तो उसके लिए नोटिफिकेशन 10 बाय 2017 रेफर करना पड़ता है. उसका पहला नंबर जो है, पहला सीरियल नंबर इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. क्लियर? एक बार भाविका एंड एवरीवन काइंडली कंफर्म. नागराजू जी, गजेंद्र जी, गजेंद्र तिवाड़ी मिस्टर. Sir, amount paid in RCM is reversed in ITC, then no tax to government. Is paid in RCM, is reversed in ITC, then no tax to government. Bhavika, no, question is not clear. If a registered person and buyer is unregistered, then can he supply claim ITC? A is registered person and buyer is unregistered. A, हाँ, because A is paying the tax to the government, ना. A is paying the tax to the government, then A को तो ITC मिलेगा. A ने जो परचेज की है उसका ITC मिलेगा. ITC means on purchase, correct ना? ITC means on purchase, not on sale. If I'm paying the tax, whether I'm making the sale to registered or unregistered or any other category, if I am paying the actual tax to the government, then whatever I have purchases, whatever the GST I have paid on my purchase, I can take the ITC, no problem. हाँ Nagaraju, 10 by 2017 is IGST notification, where you will find all the entry are same. 10 by 2017 of integrated tax and 13 by 2017 of central tax. You will find both the entry same, except few entry like import of service, like OIDA, online information database. These type of entries are additionally in the 10 by 2017. Rest are same. I could not understand why receiver pay RCM in cash, not ITC credit. So that is a rule. See, government have put certain condition. See, in case of the reverse charge, you need to pay the tax in cash. So that is the restriction. See, we can't do anything if some condition has been imposed by the government. Okay. So I have to pay the tax in cash, and other end I can take the ITC. But liability cannot be discharged through cash, through ITC. What is meaning? See, some of the liability has to be paid in cash, like interest. If I have the liability of interest, I have to pay in cash. If I have the liability of penalty, if I have the liability of late fees, if I have the liability of RCM, these all liability would be discharged in cash only. I cannot use ITC. For other tax liability, I can use ITC, I can use cash, no problem. Hemlata, whatever the notification are there, whatever the condition are there, whatever the rules are there, we have to abide the rule, right? We have to abide the rule, right? So government is saying on the legal service recipient will pay the tax. Matter close. Composition dealer first year with threshold, second year turnover exceed threshold, they switch to regular, third year again turnover is in the, then whether is regular or composition, he need to switch from regular to composition. If you like to go to the composition, you have to opt for that, or you can convert, but opting to the composition, Mr. P. Patro, yes to. But that question is basically related to registration. I will not give too much answer on that.
So let me summarize and then we'll move further. What is the summary? What is the summary? Now focus on this. GST can be paid under forward charge or GST can be paid under reverse charge. Whatever the GST you will pay, recipient will take the ITC. In the definition of ITC, we have discussed that whether recipient pay the tax under forward charge, whether recipient pay the tax under reverse charge, or whether he is paying the tax on import of the goods. See, mostly in case of the import of the goods, tax is being paid by the recipient only. See, एक बात कंफ्यूज मत होना प्लीज. इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? टैक्स रिसिपिएंट पे करता है एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस. आरसी में क्या होता है? टैक्स इज बीइंग पेड बाय द रिसिपिएंट. So what is the difference? Only difference in the GST, import of the goods is not RCM वर्ड में कवर नहीं है. अगर मैं रिवर्स चार्ज की बात करूं ना, उस डेफिनेशन में इंपोर्ट ऑफ गुड्स कवर नहीं है, बट टैक्स पे करने की जिम्मेवारी हमेशा इंपोर्टर की है. तो मेरा ये कहना है टेक्निकली, सी वी नीड टू डेवलप अवर कॉन्सेप्ट प्लस वी नीड टू क्लियर अवर एग्जाम. करेक्ट? वी हैव टू डू टू थिंग्स. We need to develop our concept, which we are doing. Plus, in exams, you have to write correct language. You do not write wrong language, even though your understanding is clear. But if you will use wrong word, then how you will clear your exam? तो मैं क्या बोलता हूँ? RCM अलग है और import of the goods अलग है by virtue of the definition in the GST. ठीक बात है? और उसके बाद हमने बोला कि कंपोजिशन को ITC नहीं मिलता. इतनी बात हमने पढ़ी है. ठीक है. बाकी सारे क्वेश्चन जो आरसीएम से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, काइंडली एक्सक्यूज मी, मैं उसका आंसर नहीं कर रहा हूं. लेट्स मूव फर्दर. नाउ बिकॉज आईटीसी इज द बेनिफिट. भाई आईटीसी क्या है? परचेजर के लिए बेनिफिट हुआ ना, तो गवर्नमेंट इज इंपोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन. नाउ 16 सबसेक्शन 1 दे आर सेइंग एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कुछ कंडीशन और गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन बताएगी. किस चीज के लिए? आईटीसी लेने के लिए. इसका मतलब क्या हुआ? हर टैक्स जो रिसिपिएंट, एवरी टैक्स विच इज बीइंग पेड बाय द रिसिपिएंट टू द गवर्नमेंट और टू द सप्लायर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर आईटीसी. व्हाई? 16 subsection 1 says that government will put certain condition, government will put certain restriction, then registered person is able to take ITC if all such condition and restriction is satisfied. What are the condition? What are the restriction? We will discuss one by one. But first thing you understand that every registered person entitled to take ITC subject to such condition and restriction. It should be used or intended to be used in the course or furtherance of business. मतलब क्या हुआ? देखो, एक छोटा सा बात एग्जांपल लेते हैं. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पढ़ाना मान लो मेरा बिजनेस है. लेट्स से कि टीचिंग इज माय बिजनेस, बट टू टीच I have purchased this laptop. I have purchased this writing pad by which I can write something. I have purchased this chair on which I am sitting. I have purchased this furniture on which laptop is kept. When you tell me whether furniture is my business, if I am purchasing the furniture, whether furniture is my direct business. क्या मैं furniture sale करता हूँ? नहीं सर, मैं sale नहीं करता, मैं use करता हूँ for my business. So some are directly related to my business, some are in furtherance of my business. Let's say यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगाई है ताकि मेरा पिक्चर, जो मेरा फेस है, वो क्लियर दिखे आपको. मैंने जो सेटअप किया है कंप्यूटर एटसेट्रा, इट इज नॉट माय बिजनेस बट इट इज इन रिलेशन टू माय बिजनेस. सो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? यहाँ पे वर्ड इसीलिए यूज हुआ है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस. And then try to understand the first 16(1) क्या कहता है? Every registered person subject to condition and restriction.
ये कंडीशन हम पढ़ेंगे 16 सबसेक्शन 2 में एंड रूल 36 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जब सेक्शन 16(2) और रूल 36 प्लस रूल 37 जब हम कंप्लीट करेंगे तब समझ में आएगा। Then I would be entitled to take ITC which are used or intended to be used। मैं लैपटॉप आज लेके आया और आई एम थिंकिंग टू टेक द क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो आई एम नॉट यूजिंग करंटली फॉर माई बिजनेस, आई विल यूज इन फ्यूचर। ठीक है। एंड सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। जीएसटी में दो तरह के लेजर, वैसे तो कई और भी लेजर होते हैं बट अभी मैं आपके साथ दो लेजर की बात कर रहा हूं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एल का मतलब लेजर समझ लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझ लिए, और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये क्या है ये समझिए। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। लेट मी कंप्लीट ऑल, देन आई विल टेक द क्वेश्चन। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सी दीज आर द टू पासबुक। जैसे मेरी बैंक में अकाउंट है और उसकी एक पासबुक होती है ना, एक समझ लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट है, एक मेरा करंट अकाउंट है। there are two type of the account in the GST. There are multiple category, but as of now I am talking two. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या है, इसमें भी कुछ क्रेडिट होगा, उसमें भी कुछ डेबिट होगा। सेम कैश लेजर में भी क्या होगा, कुछ क्रेडिट होगा, कुछ डेबिट होगा। कैश लेजर में वेरी क्लियर, व्हेन इट विल बी क्रेडिटेड, जब मैं कैश जमा करवाऊंगा गवर्नमेंट को, इट विल बी क्रेडिटेड। व्हेन इट विल बी डेबिटेड, आई नीड टू पे आरसीएम लाइबिलिटी, it will debited. I need to pay interest, it will be debited. I need to pay the penalty, it will be debited. So first I am depositing the cash to my electronic cash ledger। जैसे ही मैं कैश जमा करवाऊंगा, एक चालान होता है, ठीक है, it will be credit, it will be deposited through चालान PMT 06। so once it will be deposited, तो कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कैसे होगा, जो भी आप पेमेंट करे हो, इट कैन बी आरसीएम, इट कैन बी interest, late fees, penalty, etc. In the same pattern, credit ledger, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी अमाउंट क्रेडिट होता है। कैसे, when you file your GSTR-3B। अब what is the GSTR-3B, अभी डिस्कस करेंगे। when you file your GSTR-3B, वहां पे एक टेबल है और उस टेबल में लिखा रहता है कितनी आईटीसी है। लेट से मैंने ये 500 रुपए लिख दिया कि मैं आईटीसी ले रहा हूं, तो ये 500 रुपए मेरे क्रेडिट लेजर में क्या होगा, ये क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। कैसे डेबिट होगा, लेट्स से इन दिस मंथ आई हैव द लाइबिलिटी ऑफ 100 रुपीज। टैक्स लाइबिलिटी मेरी, मैं भी तो सेल करूंगा, मेरी टैक्स लाइबिलिटी 100 है, आई कैन यूज। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 400 रुपए। मैं रिपीट करता हूं, आईटीसी लेने की 16(1) क्या कहता है, बेसिक कंडीशन है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब वो डायरेक्ट रिलेटेड बिजनेस से हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। मैं आईटीसी ले सकता हूं, वो अभी करंटली यूज हो रहा हो या फ्यूचर में यूज कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। बट देयर विल बी सर्टेन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। क्या कंडीशन, क्या कंडीशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, दैट फर्दर वी विल डिस्कस। 16 सबसेक्शन 2 जहां पे वो 6 कंडीशन की बात करता है, रूल 36 कई कंडीशन की बात करता है, फिर 37 कुछ बात करता है। वी विल डिस्कस वन बाय वन, बट दीज आर द कंडीशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आईटीसी हमेशा मिलेगा, क्या बात कर रहे हो सर, आईटीसी इज द बेनिफिट विल बी अवेलेबल व्हेन यू सेटिस्फाइड ऑल दिस कंडीशन। ठीक है, आईटीसी कैसे मिलेगा, हाउ, हाउ यू विल क्लेम द आईटीसी। तो इन्होंने क्या बताया, इन द मैनर स्पेसिफाइड। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला, यू नीड टू फाइल द जीएसटी रिटर्न, दैट इज GSTR-3B। What is that difference between GSTR-1? What is the difference between GSTR-3B? Slightly, I will definitely touch, but for the time being, I'm telling you that first you need to file your GSTR-3B.
then you need to add the amount of input tax credit in table 4 of GSTR-3B. Then once you will file, it will be credited to the इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये क्या है? जीएसटी में वैसे तो बहुत तरह के लेजर है, बट मैं फॉर द टाइमिंग सिर्फ दो लेजर की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दिस इज नथिंग बट द बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो है, पैसा जमा करवाता हूं इसमें, कैश लेजर में कैश में जमा करवाता हूं तो क्रेडिट हो जाएगा पैसा, और जब मैं इसको यूज करूंगा फॉर पेनल्टी, लेट फीस, आरसीएम एक्सेट्रा, तो ये डेबिट हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कैसे होता है? GSTR-3B के माध्यम से। और डेबिट कैसे होगा? when you use for the future tax, whenever you use for the output tax liability, it will be debited। यहां तक मैंने आपके साथ बात की है 16 सबसेक्शन 1 की। अब हम रीड करेंगे 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन। ठीक है, हम रीड करेंगे। समय कम है मेरे पास में, देखो मैं आपको रिपीट कर दूंगा कंटेंट, ठीक है, और मैं आपके कुछ हो सकता है मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो मैं शायद सभी का आंसर नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं मेजोरिटी क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करूंगा। एक आप मुझे अलाउ करेंगे कि आई विल गिव द आंसर विच इज रिलेटेड टू आईटीसी चैप्टर। See, I have seen certain questions which are linked to the registration chapter, certain questions which are linked to the reverse charge chapter, certain questions which are linked to the exemption chapter. Kindly excuse me, I will not give the answer। ठीक है, तो ताकि क्या हम अपने मेन चैप्टर आईटीसी को बहुत अच्छे से कर सकें। अब एक बार आप प्लीज सर डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोर्स ऑफ अदर्स बिजनेस। सुशील मैंने कर दिया, कैश लेजर क्रेडिट लेजर वंस अगेन इन इंग्लिश। अभी so try to give the confirmation कि 16(1) is clear to all। Cash ledger, Rama Devi, Miss Rama Devi, cash ledger and credit ledger, I am depositing the cash, amount is credited, and then I am using that cash for payment of tax liability, for payment of RCM liability, for payment of penalty, etc. It will be debited. Similarly, credit ledger, the amount once you file GSTR-3B, ITC would be credited in the credit ledger, and when you use for the future tax liability, it will be debited। So I hope it is clear। एक बार क्विकली कंफर्म करें, इज इट क्लियर और स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन और any big problem? Goods that are consumable by recipient, then that goods unmol, not exactly where is the screen? It is not showing, so which screen, sir? I think it is clear, na? It is our question is like the sea and the time is not sea। thank you beta। Table 4A is a one table of the GSTR-3B। See, one respective table of the GSTR-3B where we are adding the amount in the amount of the ITC। Now focus on these 6 conditions। This should be thoroughly remembered to all of you। This should be thoroughly remembered। याद करना आप सभी लोगों को। Let me talk about it। Is clause A, clause B, clause C, clause D, and clause double A and clause BA। See, these are the 6 conditions for taking the ITC। This condition is being mentioned in the 16 subsection 2। What are the condition? You should have the tax। We will read bare act ka language in some time, but you should understand these are the 6 conditions। First, it should be read from the recipient angle। I have given the example, you are A, I am B। B is taking the ITC। So B के पास में क्या होना चाहिए? B should have the tax invoice। B should have received the goods or services। A has paid the taxes to the government। Try to understand। This condition is for B,
This condition is for B. This condition is for A because who will pay the tax to the government? A will pay the tax to the government. I'm talking about the forward charge. This condition is for B. GSTR-3B has been furnished. This condition is for B. It should appear in the GSTR-2B. Now the confusion starts. What is the 3B? What is the 2B? We will discuss in the next slide. We will discuss all the 1, 3B, 2B. And there is one section that ITC is not restricted. What are the 6 conditions? अभी क्या क्या है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले 6 कंडीशन याद करो. You all have to remember these 6 conditions. First is recipient should have the tax invoice. Recipient should receive the goods or services. Recipient has furnished GSTR-3B. Recipient able to see his purchase in the GSTR-2B. Recipient का ITC should not be restricted category. ठीक है? And supplier has paid the taxes to the government. Clear? Which condition is for the supplier? Tell me. Which condition is for the supplier? You tell me which condition is for the supplier. See the screen, give the answer. See the screen and give the answer. Which condition is for the supplier? अब्दुल अब्दुल खान, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए. मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया. आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर. मैं लिख लेता हूं, बट आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर. अलाउ सम टाइम. ठीक है, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा. अब्दुल, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया बेटा. वैशाली बिंदल, you forgot about the form now. Why you मतलब focus on the form? So you will again it will create the another layer of confusion. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. चलो अब बात करते हैं, मजा आएगा. अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं बीच में बता रहा हूँ. सी between I am talking about if the supplier tax has been paid by the supplier to the government, here you need to write rule 37A. Here you need to write rule 37A. What is the rule 37A? We will discuss. But only point rule 37A. आप please इसके साथ आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना. See, when we talk about in the next class, you please do not forget. Tax invoice should be there. The goods and services should be received. GSTR-3B में मुझे furnish करना है. It should appear in my GSTR-2B. These 4 condition 1, 2, 3, 4. It is for recipient, and 5th condition is also for the recipient. अब one by one start करते हैं. What is the GSTR-1? What is the GSTR-3B? What is the GSTR-2A and what is the GSTR-2B? Let me explain. But again, I will explain some component. I will not explain because it is the written chapter, GST returns, but I will explain some so that you can understand the ITC chapter. GSTR-1 is the statement for outward supply. GSTR-1 is the statement for outward supply. Only I am using the word for basic layman language का understanding. It is a sales का return है. It is return related to sales. It is the GST return for my sales. ठीक है? GSTR 2A and 2B. It is showing my purchase. Only view. You cannot file. GSTR-1 is for my sale. GSTR-2A and 2B it is auto-populated. Auto-populated
or in other word I can say it is my purchase transaction, details of purchase. And third point, it is only view, no filing, no editing allowed. And third is GSTR-3B. What is the GSTR-3B? Based on GSTR-1, I am taking the sale. Based on GSTR-2A to B, I am taking the ITC, and then net amount I am paying through cash, through ITC, whatever, and that is the GSTR-3B. It can be monthly, it can be quarterly, whatever. I'm not going into that detail. For my understanding, for completing the ITC chapter, okay, GSA is making the sale to be. You tell me the sale of 10,000 where Mr. A will report. A कौन से रिटर्न में रिपोर्ट करेगा? The sale of 10,000 where he will report, in which GST return he will report the sale of 10,000. Try to give the reply. थैंक यू बेटा सुमन फॉर अप्रिशिएशन। सभी को समझ में आ रहा है ना मेरा पढ़ाने का तरीका वरीका? क्यों आप लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं? प्रोबेबली एवरीवन इज ओके ना? और सभी को समझ में भी आ रहा है ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ? एवरीवन इज ओके राइट? अनमोल एक समझना बेटा, अनमोल मैं कैश में गवर्नमेंट को जमा करवाता हूँ तो मेरा वो जमा कहाँ होगा? वो क्रेडिट कहाँ पे होगा? कैश लेजर में। मैं जो परचेस करता हूँ उसके ऊपर जो जीएसटी होता है उसको मैं ऐड करता हूँ 3B में, और ये कहाँ जमा होगा? क्रेडिट जो हो जाएगा किसमें? क्रेडिट लेजर में। तो कैश लेजर में जो अमाउंट मैं कैश पे करता हूँ, कैश या बैंक के थ्रू पे करता हूँ, और क्रेडिट लेजर जो मैंने अपने सप्लायर से परचेस किया उसके ऊपर जो जीएसटी है वो जीएसटी। तो कैश हो गया हार्डकोर कैश जो मैंने जमा करवाया, और क्रेडिट जो मेरी परचेस के ऊपर है। क्रेडिट आप क्या करेंगे? 3B के माध्यम से आपके क्रेडिट होगा, ठीक है? और ये कैश हो गया। दोनों इसको यूज करोगे आप आरसीएम की लाइबिलिटी के लिए, टैक्स की लाइबिलिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए। इसको आप खाली टैक्स के लिए यूज कर सकते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर है बेटा? अनिदता सो मेरा, मुझे पहली बार आपका कमेंट विजिबल हुआ है। अविनाश पाटिल, आंसर इज विजिबल। हाँ, अब you all have given the right answer. You all have given the right answer that A will file this transaction in the GSTR-1. This sale is purchase to Mr. B or not? Is it the purchase to Mr. B or not? Sale by A is the purchase to B, where he will be able to show, where he will be able to see, not so, where he will be able to see this purchase ka transaction, where he would be able to see this purchase ka transaction. B को ये 10,000 का इनवॉइस कहां दिखाई देगा? आंसर इज, ये ट्रांजेक्शन कहां दिखाई देगा? मयूर बिल्कुल ठीक है, मयूर बिल्कुल ठीक है। इन द जीएसटीआर 2A/2B, 2A/2B, अभी दोनों में क्या डिफरेंस है वी विल डिस्कस, बट आपका ये ट्रांजेक्शन 2A/2B में दिखाई देगा। वो विल फाइल GSTR-3B, ए विल फाइल GSTR-3B और बी विल फाइल GSTR-3B, ऑब्वियसली बोथ। When A file GSTR-3B, assume that this is the only transaction. Assume that this is the only transaction. कौन सा ट्रांजेक्शन है? इस मंथ में सिर्फ
एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, इन्हें बी को सेल किया 10,000 का, जीएसटी 500 रुपए, और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्या करेगा? ए फर्स्ट report in the GSTR-1 10,000 plus GST 500. Once he will file the GSTR-1, then it will appear in the GSTR-2B of Mr. B and 2A also. Assume that there is no transaction, then in the GSTR-2B of Mr. A, it will be nothing now. मैं क्या कह रहा हूं? Assume that in this month there is only one transaction in A and in B, और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है. So think about GSTR-1 will be filed by A, reporting 10,500 GST liability. Because I'm saying there is only one transaction, so GSTR-2B of A would be 0. And when GSTR-3B will be furnished by A, then he will report the sales and इसके ऊपर liability कितना 500, ITC कितना 0, and he will pay 500 rupees in cash. A का ट्रांजेक्शन, तो B की बात करते हैं. B will file the GSTR-1 as nil because B की तो कोई सेल ही नहीं है. In the GSTR-2B, B would be able to see his purchase of tax rupees 500. When B will file GSTR-3B, he will show the sales as nil. He will show the ITC as 500, nothing to be paid in cash. उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 500 रुपए क्रेडिट हो जाएगा. Let me repeat entire thing in English once again. I am showing this chart for understanding the 1, 2A, 2B and 3B. There is one outward supply by A to B. There is only one transaction in the entire month with respect to A and with respect to B. सिर्फ एक single transaction. A is making the sale of 10,000 by charging the GST of 500. Now, when A will report in the GSTR-1, he will put the B ka GST number, he will report the detail, and finally he will report the entire sales invoice, sales transaction in the GSTR-1. What is the impact once A will file the GSTR-1? The impact will be automatically, it will goes to the GSTR-2B of Mr. B. It will automatically goes to the GSTR-2B of Mr. B. Fine. Now, there is no other transaction. Try to file all the return of GSA and try to file all the return of Mr. B. First, talk about A. He will file the one. Yes. What will be the transaction? 10,000 and tax liability 500. Whether he will pay the tax through one? No. Liability will be discharged in GSTR-3B. ठीक है. Now, second, whether there is any GSTR-2B? Answer is no. Because A has not made any purchase, so there will be no ITC. He is required to file 3B. Answer is yes. 3B has to be filed in every month or every tax period. Tax period can be monthly, can be quarterly. I am not going into the detail. What is the QRMP? What is the quarterly? No. I am only talking about 1B, 3B. So when he filed the GSTR-3B, he will report the sales liability of 500. He will report the 0 ITC. Rupees 500 will be the net liability which he has to pay cash. So once he will pay cash, it will be credited in the cash ledger. जैसे वो कैश पे करेगा, उसके क्रेडिट कैश लेजर में कितना क्रेडिट होगा? 500 रुपए. And he can use for tax liability of 500. Closing balance would be 0. अब B की बात कर लेते हैं. When B will file the GSTR-1, it will be the nil. कोई सेल ही नहीं है ना. When B will see the 2B, there will be the 500 ka purchase. When B will file the GSTR-3B, he will report the sales as nil. He will report the ITC as 500. Is there any tax liability? Net liability? Answer is no. So this 500 would be credited to the
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यहाँ 500 रुपए आपको क्रेडिट दिखाई देगा, लेट्स से GSTR-3B, and there is no utilization, so the closing balance would be 500. Is it clear? Is it clear? Till now, is it clear? 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, we will be see the purchase transaction. Lot of क्वेश्चन। सो मुझे एक तो आपको माफ करना पड़ेगा कि मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा लिटरली, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सच ए वे एंड आई विल use 3, 4, 5 question so that maximum I can explain in a better way. एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर या कोई डाउट है? इफ यू हैव द डाउट, नवंबर 24 का अभी कैसे कह सकते हैं? मोस्टली सेम रहता है बेटा, बेटा मोस्टली सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। सर व्हाट इज द, हाँ अब मैं आता हूं नाउ। If there is a Pooja has asked the question, B is 10,000 and GST is 18, can you utilize 500 ITC? हाँ हाँ 100%, 100%। Pooja, let's say if B has some tax liability, he can use ITC, no problem na? In GSTR1 sale of ऐसा किसका? GSTR1 A का कि B का? In GSTR1 you are talking about ऐसा, if there is a sale, then I will report my sale. If it is taxable sale, I will report the GST. If it is exempted sale, I will report only sale, no tax liability. But if there is a sale and there is a GST, I will report both. See, Anmol, credit ledger is being used for FCM, correct? And cash ledger for multiple purpose. Cash ledger can be used for RCM liability, can be used for forward charge liability also. Suppose I have the sale like A. A is making the sale under forward charge, but he does not have any ITC, so he will pay cash. So cash का लेजर का बहुत यूज है, क्रेडिट का लिमिटेड यूज है। अब्दुल, बात तो ठीक है, आपकी बात तो ठीक है कि 500 रुपए चार्ज कर रहा है। सी जीएसटी इज द वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट। जब जितनी बार सी एक्चुअल में गवर्नमेंट को ए से बी को सेल किया तो क्या कोई फायदा हुआ? नहीं। अल्टीमेटली व्हेन द सेल गोज टू कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड पार्टी, देन ओनली द गवर्नमेंट विल हैव द एडवांटेज, अदरवाइज कुछ नहीं है। लेकिन हर वैल्यू एडिशन पर, भाई आज मैं बेचूंगा तो कुछ प्रॉफिट में बेचूंगा ना, सेल करूंगा तो every value, see GST is the value addition tax, and ultimately when the chain broke, when the chain is completed, then only the tax is goes to the government. Ultimately government को benefit वही होगा, नहीं तो एक पे करेगा दूसरा ITC लेगा, नेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, but every value addition government will get, and second government will get when the sale is made to the consumer. हाँ Rahul, for every GST registration there will be the credit ledger separately. So invoice, Vikas ka question, invoice dated 30 January, ITC reflected in 2B same month, January goods actually received in February, which month ITC? There is a concept of taking the ITC and reversing the ITC. In January I will take and I will reverse, net amount 0. In the February I will actually take ITC. Reporting pattern has been changed in the GSTR-3B by virtue of some circular 170. I'm not talking about that only, but yes, the pattern of reporting in January I will take and reverse, and in February I will actually take. Isa, in the GSTR1, I will report every detail. What is the invoice number? What is the invoice date? What is the name of registered party? Okay. What is the taxable value? 10,000. What is the GST? 500. Which GST? IGST, CGST, SGST. Then what is the total invoice value? 10,500. I will report entire chain.
नहीं, he can't take the ITC. So what is the difference between GSTR-2A and 2B? Only difference, 2A is a dynamic document and 2B is a static document. It means it is being generated once this GSTR-1 is filed on time. Due date of the GSTR-1 is 11th. I am talking about monthly, 13th quarterly. If I am monthly taxpayer, I will file the GSTR-1 by 11, then it will appear in the GSTR-2B of recipient. If I will file on 12th, it will goes to the next month GSTR-2B. Try to understand. Let me show one chart. I'm talking about for the month of January 2024. A is filing the GSTR-1 for this sale, 10,000 plus 500. If A file GSTR-1 by due date, if A file GSTR-1 by due date, then B would be able to see this transaction in the GSTR-2B of January. And he can take the ITC in the January. If A filed the GSTR-1 after due date, B would be able to see in the February GSTR-2B. B would be able to take ITC not in Jan, B would be able to take ITC in Feb. Suppose if the GSTR-1 is filed by 11th for January, it is filed by 11th, it will appear in the GSTR-2B of January. B would be able to take ITC in January, no problem. Second point, assume that B is filing after the due date. A is filing GSTR-1 after the due date. Whether B would be able to see in the same month? No, it will goes to the next month. That is the problem. That is the problem. Why problem arise? Because A not filed the GSTR-1 in time. So what is the penalty? B cannot take the ITC in the same month. So when he will filing the GSTR-3B, he can't take the ITC in January. He has to take ITC in February. What is the difference between GSTR-2A versus GSTR-2B? This GSTR-2B is the ITC document. 2A is only for view purpose, no use for ITC. पहले इनिशियली जब इनिशियली जीएसटी बना था ना, तो बीच में 9th October 2009, मतलब इनिशियल ईयर्स फॉर सम टाइम इट वाज GSTR-2B, बट फाइनली फ्रॉम 1/1/2022 आईटीसी के लिए GSTR-2B को मैंडेटरी बना दिया. फ्रॉम 1/1/2022 न्यू सेक्शन 16 subsection 2 clause AA was inserted and Rule 36(4) was amended. After that, GSTR-2B become the base for input tax credit. 2B में डॉक्यूमेंट 2B में परचेस कब आएगी? अगर सप्लायर ने GSTR-1 टाइमली भरा है तो इस मंथ में आएगी. अगर लेट कर देगा तो इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में जाएगी. 2A GSTR-1 कभी भी भरो, GSTR-1 कभी भी भरो, it will be updated always, and therefore now this is not the ITC document. Therefore we are calling 2A is a dynamic document and 2B is the static document. 2A is the dynamic document, 2B is the static document. ठीक है? It is used for ITC? No. It is used for ITC? Yes. 2A is not used for ITC, but 2B is used for ITC. If GSTR-1 filed by the supplier by due date, then it will appear in the same month. Otherwise, it will go to the next month. Clear हुआ? What is the difference between 2A and 2B? एक बार quickly confirm करो so that I can understand.
Mayur, the sixth condition, if any condition is not satisfied, ITC not available. So you are saying tax invoice is not there. So I can say that he cannot take the ITC. See, I have discussed these six conditions. सुशील GSTR-3 ये नोटिस है, GSTR-3 नोटिस है, आंसर इज यस है सिस्टम में, बट एक नोटिस है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स के लिए. ब्रेक मैन डू यू नीड द ब्रेक यार? चलो सर, मैं ना 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ. लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट. लेट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट. मनीष जी 10 मिनट का ब्रेक स्टार्ट कर दीजिए. 7:40 पर वापस स्टार्ट कर देंगे.
ठीक सर. So there was some question with respect to 2A, 2B. Let me answer that. I have prepared one chart for you. When the GST was introduced, then there was no concept of 2A, no concept of 2B. When the GST was introduced, from 9th of October 2019, new rule was inserted, that is Rule 36(4), and they have brought into the picture GSTR-2A. Okay. At that point of time, there is no concept of 2B. So finally, 1/1/2022, they have inserted new section, they have revised the Rule 36(4), and they have made GSTR-2B for taking the ITC, and then 2A become redundant. This is the pictorial, I can say, tabulization between 2A and 2B का applicability. मैं एक बार रिपीट करता हूं, जब जीएसटी शुरुआत हुई थी तब 2A 2B दोनों नहीं था. 9 अक्टूबर 2019 को रूल बना, 2A पिक्चर में आया, उस टाइम भी 2B अवेलेबल नहीं था. और 1 जनवरी 2022 को 2A खत्म कर दिया. 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ 16(2) में, और रूल को सब्स्टिट्यूट किया, और 1/1/2022 से 2B बन गया. फॉर ITC 2A बिकम रिडंडेंट फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड. ये तो हुआ 2A 2B में डेट का एप्लीकेबिलिटी. क्वेश्चन था, सप्लायर अगर फाइल नहीं करेगा तभी 2A में दिखाई देगा? नहीं सर, जब GSTR-1 सप्लायर फाइल नहीं करेगा, ना तो 2A में आएगा ना 2B में आएगा. फिर क्या, सप्लायर अगर टाइमली फाइल करता है, टाइमली GSTR-1 फाइल करता है, लेट से जनवरी का बात कर रहा हूं, ये जनवरी के 2A में भी आएगा, जनवरी के 2B में भी आएगा. अब मैं थर्ड सिचुएशन ली मैंने. पहली सिचुएशन, सप्लायर फाइल ही नहीं करता R1, तो GSTR-1 तो ना तो 2A में आएगा ना ही 2B में आएगा. सप्लायर टाइमली फाइल कर देता GSTR-1, लेट से जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, तो 2A में भी आएगा 2B में भी आएगा. लेट फाइल करता है GSTR-1, तो 2A में तो आएगा, लेकिन 2B ऑफ सेम मंथ में नहीं आएगा, ये चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में. इससे क्या प्रॉब्लम है, इसको नुकसान हो गया, बायर को 1 महीने का ITC उसको लेट मिलेगा. इज इट क्लियर? मैंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए, 2A 2B का एप्लीकेबिलिटी एंड 2A 2B में रिफ्लेक्शन कैसे होगा GSTR-1 के माध्यम से. If a recipient purchase in January on which GST is 10,000, in the month of February, GSTR-3B recipient pay GST and utilize ITC. In the condition 16(2), ITC can avail by the recipient after filing the GST. After filing the 3B, या मैं कहूँ 3B में लेगा, I can say that ITC will be taken in the GSTR-3B only. So I can say the condition कि GSTR-3B उसको furnish करना है, for taking the ITC there is no any other form. टाइमली मतलब जो भी ड्यू डेट है भाभी का, मंथली के केस में 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वार्टरली के केस में 13th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर या 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ है IFF. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा. अब हमने क्या बात की, ये कंडीशन की बात की. अब मैं पहली कंडीशन पिक करता हूं, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. अच्छा, ये टैक्स इनवॉइस किसके पास होना चाहिए, रिसिपिएंट के पास कि सप्लायर के पास? क्विकली आंसर करो. ये टैक्स इनवॉइस किसके पास होना चाहिए ITC लेने के लिए, रिसिपिएंट के पास कि सप्लायर के पास? याद रखना 16(2) इज स्टार्टिंग विद नॉट विद स्टैंडिंग. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आए तो 16(2) के कंडीशन में ये वाला क्लॉज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट. ठीक है, ये इसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए. जब भी वर्ड, ये हम सेक्शन रीड कर रहे हैं, वी आर रीडिंग द सेक्शन, whenever there is word prescribed, it means you have to refer the rule. Whenever in the section there is a word prescribed, it means you have to refer the rule. What is the rule? Rule 36 sub rule 1. For this we have to refer the rule. They are saying he is in possession of tax invoice. He का मतलब क्या हुआ, recipient. recipient के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए. अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, ये रूल 36(1) कहता है. रूल 36(1) कहता है
The document can be invoice. Document can be self-invoice. In case of the reverse charge, self-invoice will be prepared by the recipient if supplier is unregistered. Okay. Subject to payment of tax. We know that RCM ka ITC cannot be taken without payment of tax. Third is debit note. Fourth is bill of entry at the time of custom clearance. If we are purchasing the goods, importing the goods, then we have to file the bill of entry. So bill of entry is become the document for taking the ITC. ISD invoice or ISD credit note. Okay. So input service distributor, that is another concept. If head office like to transfer the common ITC to the branches, then in the GST there is another mechanism called ISD. मैं repeat करता हूं. In case of reverse charge, I have given the example. A is a transporter making the service to B. B will pay the tax under reverse charge. Yes. And also make the document which is called as self-invoice. A will make the supply to B. B will pay the tax and B will prepare the self-invoice. Remember, self-invoice will be prepared only when supplier is unregistered. ITC of RCM, obviously subject to payment of tax. Third is debit note. Fourth is bill of entry. Fifth is ISD invoice. What is the ISD invoice? Company have one head office and there are three branches. Branch 1, branch 2, branch 3. And all are belong to another, all different state. HO has taken certain service for the benefit of the branch 1, branch 2, branch 3. Then this HO has to take one more GST registration under the ISD category. What happens, sir? Why he has to take? The GST law says that HO, which is taking certain common service, HO has to distribute through ISD mechanism. So he will issue the ISD invoice. He will file the GST return applicable for ISD invoice. And by this, they can take the ITC. So branch will take the ITC on the basis of which document? ISD invoice. Clear? So what we have discussed, our first condition talks about that there has to be tax invoice or debit note or any other document. Word is written prescribed or prescribed का मतलब क्या होता है? Rules. In the rules they are saying tax invoice, debit note, ठीक है. RCM self invoice subject to payment of tax, bill of entry and ISD invoice. When the ISD invoice would be issued, let's say one head office is there. They are having the multiple branches. Head office has taken certain services. Let's say he has hired a statutory auditor. Obviously, audit will be for all the company, entire company, now for all the branches. Now this HO will take registration under ISD category. It is a new registration, separate category of registration. So what is the purpose? So that once the credit will be received in the ISD number, he will distribute this credit, input tax credit, to the branches. We know that GST is the state-wise concept. So branch 1 in Gujarat, branch 2 is in Maharashtra, branch 3 is in Rajasthan. So they will have the different GST number. And head office, let's say it is in Delhi. So now Delhi will take the auditor ka tax invoice in the ISD number. What happened? ISD will have the ITC. Now this ITC will be distributed to A, to B, to the multiple branches, 1, 2, 3, Maharashtra, Rajasthan, whatever the branches is there. It will be distributed in the turnover ratio, and the branch will take the ITC on the basis of which document? Rule 36 says the document would be, Rule 36 says the document would be ISD invoice. Now, second condition. Let me see any question. बीस डेट भाभी का बेटा 3B की होती है, मंथली 3B की.
अविनाश, नॉट सो इन जीएसटीआर 2A नहीं, ये करेक्ट नहीं है. नॉट सो इन द जीएसटीआर 2B, ये करेक्ट है. 36(1) branch can also transfer the ITC to the HO. Yes, but that is through the ISD. What is the ISD? So मैंने please explain the point भी once again. हाँ मैं करता हूँ. अविनाश क्लियर हुआ ना कि जीएसटीआर 2A में तो दिखेगा, 2A तो डायनेमिक है, वो दिखता रहेगा, लेकिन 2B में नहीं दिखेगा. अभी तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा ना. ओके, सेल्फ इनवॉइस वाला पॉइंट क्लियर नहीं है ऐसा. A is the transporter making the supply to B. B will pay the tax under reverse charge and take the ITC. Now, there could be two scenarios. A may be registered. So you may say, sir, if registered, then RCM is not applicable. See, if you read the RCM chapter 9394, you will understand that in the 9 subsection 3, supplier can be registered or supplier can be unregistered. It can be possible, but RCM would always be applicable. RCM would always be applicable. Perfect example, GTA. If the GTA is registered, no self-invoice. If GTA is unregistered, self-invoice. Who will prepare the self-invoice? Who will prepare the self-invoice? Obviously, recipient. Who will pay the tax to the government? Obviously, recipient. RCM है ना, RCM है तो B टैक्स पे करेगा, B ITC भी लेगा. टैक्स कौन पे करेगा? B. कौन ITC लेगा? B. सेल्फ इनवॉइस कब बनाएगा? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो बनाना है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड नहीं है मतलब रजिस्टर्ड है तो नहीं बनाना. क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि उस केस में A will issue the tax invoice. ISD कोई भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है. ISD मेरे को नहीं मालूम आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर हुआ या नहीं हुआ, बट इन द GSD, in the GST, ISD can be taken by anyone. So ब्रांच भी ले सकता है. सपोज कोई ब्रांच 1 एक कोई सर्विस ले रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, then this branch can also take the registration under the ISD category. Not necessary कि HO ही ISD लेगा, नहीं, ब्रांच भी ले सकता है. Only point, who like to distribute the credit to the GST number, distinct person will take the ISD registration and transfer the credit. Provided there has to be the common service. ऐसे आपको ITC ट्रांसफर करना, it is against the law. It is against the law. You cannot transfer the ITC. There has to be some common ITC which is being used for the benefit of multiple branches. Then only you can transfer the credit. Otherwise, no. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्रेडिट किसी और को ट्रांसफर कर दूं. ऐसा नहीं हो सकता. It is violation of the law and huge penalty would be there. Anyone have any doubt? Please ask. Anyone have any doubt? Kindly ask. Or is it clear? Kindly confirm. Or is it clear? Kindly confirm. Next condition is that it should appear in the GSTR-2B that we have discussed. Okay. Now, correspondingly, I have given the rule 36(4) which talks about GSTR-2B. 16(2)AA read with rule 36(4) from 1/1/2022. It says that you have to take the ITC only when it appears in your GSTR-2B. In your GSTR-2B. So it is saying that the details of invoices have been furnished by the supplier in the GSTR-1. So what is the 16(2)AA? It says that supplier file GSTR-1 and on the basis of which recipient would be able to see the transaction in the GSTR-2B. The third condition, that he has received the goods or services. Now,
in the explanation, there are 2 points which is talking about that it shall be deemed that registered person has received the goods or services. One point is clear. ISD registration is different from normal. ISD become, who will become ISD? Anyone can become the ISD, na? Who has taken the registration. हाँ, ISD का tax invoice issue करेगा. ISD invoice will be issued by the head office, or who has taken the ISD registration, and recipient branch will take the ITC. R1 filed after the due date, Abdul, it will not appear in the same month GSTR-2B. If I am filing R1, A is filing R1, and B is the customer. If R1 is being filed within the due date, it will appear in 2A and 2B. If R1 is filed after the due date, it will appear in 2A, but it will not appear in the GSTR-2B of the same month. Obviously, it will appear in 2B, but it will go to the next. What is the penalty? The penalty will be that he cannot take the ITC in same month. Customer cannot take the ITC in same month. Fine. 5 minute क्विक राउंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर. एक बार 5 मिनट क्विक राउंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. अभी हमने बात की रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज. प्लीज टेल मी which registration cannot take the ITC. Please tell me which registration cannot take the ITC. एक बार थोड़े क्विक राउंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर करते हैं. Which registration cannot take the ITC? Please active, give me the answer. Let me take 5 or 10 minute quick round of the question answer. Let me take 5 or 10 minute quick round of the question answer to revise something whatever we have discussed. काफी टाइम से आप लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं. You are reading since long. अब मुझे बताइए कि कौन सा रजिस्ट्रेशन आईटीसी नहीं ले सकता. Which registration cannot take the ITC? Which registered person cannot take the ITC? Answer is composition dealer. I have told you one thing, that please do not say this transaction as RCM. I have told you one thing, that conceptually it is correct, but technically you will be incorrect. I have told you one thing, that please do not say this transaction as RCM. What is that? Khushi Sau, Samadhan registration cannot take the ITC. Yes. Right. Now my question is that I have told you one thing, that please do not use the word reverse charge for this transaction. It is equally, I do agree that recipient is paying the tax, but technically you will be incorrect. Which? The answer is import of goods. Very nice. Next question to all of you. We have discussed multiple conditions for ITC. We have discussed multiple conditions for taking the ITC. Okay. Which condition, which return is being told that it has to be furnished? हमने एक returns का बात किया था, that return has to be furnished. Which return has to be furnished? There are multiple conditions. In one of the condition we talked about, that return has to be furnished. Oh my God. Let me ask again. I am talking about that there is one condition, that recipient has furnished one return. Which return has to be furnished by the recipient? Furnished by the recipient. Which return is to be furnished by the recipient? Which condition was there, that one condition was there regarding the furnishing of return by the recipient? Which return? Rahul Sharma, answer is yes, but that GSTR 6 would be there for ISD category.
not GSTR-1 3B, but GSTR-6, by which he can transfer the ITC. कौन सा रिटर्न रिसिपिएंट को फर्निश करना है एज पर द कंडीशन? आंसर इज GSTR-3B. आंसर इज GSTR-3B. आंसर इज GSTR-3B. क्या GSTR-2B सिर्फ देख सकते हैं? इज इट ओनली द व्यू पर्पस और इट हैज टू बी फर्निश्ड? Whether GSTR-2B is to be furnished or it is only for view purpose? Whether GSTR-2B is to be furnished or only it is to be view purpose? Abdul, what is furnished means? Furnished मतलब भरना, जो रिटर्न हम भरते हैं. The return which will be furnished, that is GSTR-3B. Recipient को GSTR-3B भरना होता है. क्या वो 2B भी भरेगा? नहीं, 2B तो मुझे दिखता है. 2B is only for view purpose to see my purchase transaction. 2B is only for view purpose to see my transaction. Next question. मुझे 2B कब दिखाई देगा? If which return is to be furnished by which party? Please tell me, 2B में transaction कैसे आता है? 2B में purchase कैसे आती है? You tell me how the GSTR-2B show any transaction. On what basis GSTR-2B show any transaction? On which basis the transaction coming in GSTR-2B? On what basis the transaction is coming in GSTR-2B? Very nice. I am able to see most 40-50 participants immediately giving the reply. Very nice. It's really motivate me. On which basis the GSTR-2B is updated? The answer is, in the GSTR-2B, the transaction is appearing based on the filing by supplier. Which filing? GSTR-1, and that to be by the due date. By the due date. Correct. GSTR-1 by the supplier, by the due date, then it will appear in the GSTR-2B. Perfect. Out of the various condition, one condition was that belongs to supplier. There are multiple conditions, but one condition was talking about the supplier. कि supplier को ये करना. What was that condition? We have talked about multiple 6 conditions. Total 6 conditions are there. Out of one condition was on the supplier. That अगर supplier ये करेगा तो मुझे ITC, मैं recipient हूँ, आप supplier हैं. Which out of the 6 condition, one condition is on you. Supplier के ऊपर थी, वो कौन सी condition थी? Which condition pertain to the supplier? That he has to furnish? No, he has to pay the taxes to the government. Out of the 6 conditions, he has to pay the taxes to the government. That is one condition. Rest all the condition is for the recipient. I do agree that GSTR-2B is on me, but 2B will be updated based on the supplier R1. But that is not the condition. Supplier को R1 फाइल करना, ये condition लिखा हुआ नहीं है. उसने लिखा recipient, मतलब you can say supplier R1 has to be filed. That is okay. So that is okay, but supplier has to furnish the GSTR-1 and it should come in the GSTR-2B. Absolutely correct. And one condition, that supplier has paid the taxes to the government. Anyone remember that I told you that? See, again, let me repeat. Supplier has to file GSTR-1 and based on the recipient should be able to see GSTR-2B, and one condition that supplier pay the taxes to the government. Correct? अभी एक चीज बताइए मुझे,
In case of the reverse charge, what is the name of the document which is to be prepared by the recipient? What is the name of the document which is to be prepared by the recipient? हमने एक डॉक्यूमेंट का नाम पढ़ा था जो कि रिसिपिएंट बनाएगा इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. What was the name of the document? One document will be prepared by the recipient, which is mandatory for taking the ITC. That is to be prepared by the recipient. What was that document? What was the name of the document which is to be prepared by the recipient? What was the name of the document which is to be prepared by the recipient? We have talked about one document. The answer is self-invoice. Now, tell me one thing. In case of the self-invoice, so I'm talking about in case of the reverse charge, self-invoice to be prepared in all cases, or where supplier is registered, then it will be prepared, or when supplier is unregistered, then it will be prepared. Three situations. Self-invoice will be prepared by the recipient in all cases of RCM, or where supplier is registered, then only it will be prepared, or when supplier is unregistered, then only it will be prepared. In which cases the self-invoice would be prepared by the recipient under reverse charge in all cases where supplier is registered, then where supplier is unregistered, then. Kindly tell me in which case self-invoice would be applicable. So multiple answer. Now it appears that there is a doubt. Remember always this chart. इसका मतलब डाउट है, इसका मतलब डाउट है. RCM, ठीक है. सेल्फ इनवॉइस, supplier is unregistered, supplier applicable. Yes. If supplier is registered, please remember no self invoice. Please remember no self invoice. Why? Why? Because supplier will issue tax invoice. Self invoice will be prepared by whom? By supplier or by recipient? Self invoice कौन बनाएगा? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. Who will prepare the self invoice? Please give the answer. Who will prepare the self invoice? Please give the answer. Who will prepare the self invoice? Self invoice से related some question. Self invoice से related some question. First, who will prepare? Supplier या recipient या दोनों? Who will prepare self invoice? Supplier या recipient? Correct answer is supplier. Self invoice is applicable in case of forward charge or in case of RCM, or both. When it is applicable in the forward charge or in the reverse charge, or both. It will be applicable in forward charge or in reverse charge, or both. Forward charge, RCM या दोनों. कब self invoicing applicable होगा? Will it be applicable in forward charge? Will it be applicable on reverse charge?
कब एप्लीकेबल होगा? सिर्फ रिवर्स चार्ज के केस में सेल्फ इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है, ओनली इन केस ऑफ आरसीएम। हु टोल्ड सप्लायर? ओहो, 1 minute, 1 minute, sorry, I'm so 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 sorry. Who will prepare the self invoice? Sorry, thank you, Sushil. Who will prepare the self invoice? Sorry, recipient. I'm so sorry. Who will prepare the self invoice? Recipient. When it is applicable, FCM or RCM? Right answer is reverse charge. Right answer is reverse charge. Ramja, I'm so sorry. I'm so sorry. Is it clear now? Now is it clear? एक मिनट वापस क्वेश्चन वन पूछता हूँ. Who will prepare? Answer is recipient. When it will be prepared? Answer is RCM. Is it clear to all? Suman, I have corrected myself. I have corrected myself. Sorry. Is it clear to all now? पहले मुझे आप कंफर्म कीजिए. Is it clear to all now? हाँ, आपका आंसर, सभी का आंसर सही था जिन्होंने भी कहा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, who will prepare the self invoice? Recipient. When it is applicable, forward or RCM? Answer is reverse charge. When it is prepared by the recipient, if supplier is registered or it is unregistered or it in both the cases. Now give me the answer. Registered, unregistered या सभी केसों में? रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या दोनों में? When the RCM when the recipient will prepare the self invoice in case of reverse charge, when supplier is registered, when supplier is unregistered, कब बनाएगा recipient RCM self invoice? The answer is unregistered. Unregistered. Why self invoice? Why self invoice is required? Why self invoice is required? What is the biggest advantage for self invoice? What is the biggest advantage to recipient? What is the biggest advantage to recipient? What is the biggest advantage to recipient for preparing the for self invoicing? क्या उससे फायदा होता है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. What is the biggest advantage? Rule 36 सब रूल 1 क्लॉज बी, आईटीसी लेने के लिए. Whether cash payment is mandatory for taking the FCM ITC. मेरे पास में, try to understand, A has issued the tax invoice to B 10,000 and plus 500, total 10,500. क्या B को पेमेंट करना जरूरी है A को फॉर टेकिंग द आईटीसी? लेट्स से इट इज जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन, ये जनवरी में आईटीसी लेना चाहता है. सो वेदर बी इज रिक्वायर्ड टू पे दिस मच ऑफ द अमाउंट टू ए, वेदर बी को अमाउंट ये 10,500 पे करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द आईटीसी, इट इज मैंडेटरी. इन केस ऑफ द एफसीएम ट्रांजेक्शन इन दिस एग्जांपल, कैन बी अवेल द आईटीसी विदाउट मेकिंग द जीएसटी कंपोनेंट का पेमेंट टू द सप्लायर? केशव चौधरी, आंसर इज यस, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं है पैरामीटर में. सेल्फ इनवॉइस इज नथिंग बट द टैक्स इनवॉइस, बट ओनली खाली बनाने का जिम्मेवारी सप्लायर की जगह रिसिपिएंट पे शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट.
प्लीज लिसन क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज लिसन क्वेश्चन केयरफुली। मैं रिपीट करता हूं, ए ने जनवरी मंथ में एक टैक्स इनवॉइस इश्यू किया 10,000 प्लस 500 का जीएसटी, टोटल 10,500। बी जनवरी मंथ में आईटीसी लेना चाहता है, बट वो पे नहीं कर रहा, अभी इसने पेमेंट नहीं किया। क्या बी आईटीसी ले सकता है? इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस 500 कैन बी क्लेम द आईटीसी, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज ट्रांजेक्शन, कैन बी क्लेम द आईटीसी बिकॉज अभी तक उसने टैक्स का पेमेंट सप्लायर को नहीं किया, अभी तक उसने पेमेंट सप्लायर को नहीं किया। क्या बी को आईटीसी मिलेगा 500 रुपए का? इट इज ए फॉरवर्ड चार्ज ट्रांजेक्शन। क्या बी को पेमेंट करना पड़ेगा ए को टू टेक द आईटीसी, या जरूरी नहीं है? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। आईटीसी अलाउड इवन नो पेमेंट। समझिए ये बात। अब यहाँ पे मैं एक आपको नया पॉइंट बता रहा हूं, 16(2) का प्रोवाइजो बता रहा हूं, रूल 37 बता रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पॉइंट। इन केस ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज ट्रांजेक्शन, बी को इमीडिएटली पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटी लॉ बोलता है कि बी को इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना है, he can take the ITC but 180 डेज के अंदर अंदर, विद इन 180 डेज बी ए को पेमेंट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इमीडिएटली पेमेंट नो रिक्वायरमेंट, विद इन 180 डेज इट इज ओके। इफ बी मेक द पेमेंट टू द ए विद इन 180 डेज, नो प्रॉब्लम। सर इफ नॉट विद इन 180 डेज, if not within 180 days, then he has to reverse the ITC along with interest. मैं बात एचसीएम की कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आप, अगर मैं इफ आई आस्क द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज ना, अगर मैं यहां पर आरसीएम कहता ना, then you will say payment is mandatory for taking the ITC. Try to differentiate. This question was of reverse charge, then B has to pay the GST to the government for taking the ITC. पर मैंने क्वेश्चन किसका पूछा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आरसीएम एफसीएम का। इन केस ऑफ द एफसीएम, immediately recipient is not required to make the payment to the supplier. He can take the ITC, no problem. But there is one another provision, there is one another provision, 16 subsection 2 का proviso, read with rule 37. You will understand that the payment if not made within 180 days, then recipient जिसने ITC पहले लिया था, he has to reverse along with interest. He has to reverse along with interest. Is it clear? एक बार कंफर्म करें, is it clear? He has to reverse along with interest. Is it clear? कि FCM में मुझे कैश पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं इमीडिएटली। How can sir unregistered application take the ITC tool wrong as answer is self-invoice benefit for the recipient? Answer in self-invoice नहीं। अरे बेटा वापस रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो कंफ्यूजन है, मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहले मुझे बताइए, एक जीटीए जो कि अनरजिस्टर्ड है, वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है मिस्टर बी को जो कि रजिस्टर्ड है। लेट्स से अब्दुल, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं एंड आई एम लिंक टू ऑल, बट यू नीड टू स्पेशली कंफर्म दैट इज इट क्लियर और नॉट। अब इसमें आरसीएम में टैक्स रिसिपिएंट पे करेगा, तो आरसी में पे करेगा तो उसे एक सेल्फ इनवॉइस बनाना है, और बिकॉज वो टैक्स पे कर चुका तो इसकी आईटीसी ले सकती है।
तो मैं आईटीसी जीटी की बात नहीं कर रहा हूं। यू आर सेइंग दैट अनरजिस्टर्ड कैसे आईटीसी ले सकता है, मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स पे करना है, सेल्फ इनवॉइस बनाना और आईटीसी लेनी है। बी को तो रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा ना। अगर बी रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स, वो टैक्स कैसे पे करेगा आरसीएम में? इफ बी इज नॉट रजिस्टर्ड देन वो कैसे टैक्स पे करेगा आरसीएम में? तो मैं बी को आईटीसी दिला रहा हूं मेरे एग्जांपल में। आई एम ट्राइंग टू गिव द आईटीसी टू मिस्टर बी, recipient who has paid the taxes. Obviously he is registered, then only he is paying the taxes. तो बी क्या करेगा, एक हाथ से टैक्स पे करेगा कैश में और दूसरे हाथ से आईटीसी ले लेगा। तो मैं अनरजिस्टर्ड की आईटीसी की बात ही नहीं कर रहा हूं अब्दुल। आई होप इट इज क्लियर ना। अभी अभी बात क्लियर है ना सर ये वाली? मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको भाभी का, मैं इंटरेस्ट पे आ रहा हूँ, पहले मुझे बताइए। पहले अब्दुल आरसीएम वाला डाउट कंफर्म करो मुझे। एक 180 डेज पेड आउट है, इंटरेस्ट पे डाउट है, और ठीक है पूजा। आयशा प्लीज क्लैरिफाई 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट। मैं वापस करता हूँ अब्दुल, हाउ कैन सर अनरजिस्टर्ड परसेंटेज, ठीक है ये क्लियर कर दिया। 180 डेज बी कैन नॉट क्लेम व्हेन इंटरेस्ट कब से शुरू होगा मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर द पीरियड ऑफ आईटीसी, इफ बी डज नॉट पे मिस्टर बी हैव टू रिवर्स आईटीसी, करेक्ट? हाँ मयूर बिल्कुल ठीक, नो बी, ठीक है। अभी मोटा मोटी ठीक है यहाँ पर सब लोग। अभी मुझे एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, पहले मुझे एक बार। अब एक डाउट आता है 180 डेज का, तो let me explain once again in English. Let me explain this part. You mean to say this part I have to speak in English, Sangeeta Vani? Let me explain in English again, no problem. See, I was talking about that GT is unregistered, correct? And Mr. B, who is a recipient, okay, and he is a supplier, correct? So B, recipient who is registered, taking the service from the GTA, so B has to pay the tax. That is because of reverse charge. B has to prepare the self invoice, correct? And B will take the ITC. That part I was clarifying. Recipient will pay tax, recipient will prepare self invoice, and recipient will take ITC. So there was a confusion which I got from the from the answer, that how the unregistered can take the ITC. This ITC I am talking about for Mr. B. I am not talking about for GTA. That part I like to clarify. Now, let me go to the 180 days wala concept. See, 180 days would be counted from date of invoice. 180 days from date of invoice. 180 days from date of invoice. He has not made the payment. Who? Recipient. To whom? Supplier. किस चीज का? टोटल इनवॉइस वैल्यू का। टोटल इनवॉइस वैल्यू का अगर पेमेंट नहीं किया है बाय बी टू ए, देन ही हैज टू रिवर्स द आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट। Speed is very slow. No problem. We will manage. We have the 5 days total. Abdul, why recipient pay the taxes? Because it is reverse charge. In the GST, section 9, subsection 3 says that if the recipient is receiving the service from GTA, then recipient will pay the tax because of reverse charge. ओके अब्दुल 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 अब्दुल, क्लियर क्लियर, अभी वाला स्टेटमेंट अभी मुझे मिला। सो नाउ आप एकदम क्लियर है, आरसीए में कोई डाउट नहीं है, आईटीसी में भी कोई डाउट नहीं है, सेल्फ इनवॉइस में भी कोई डाउट नहीं है, करेक्ट अब्दुल? एंड करेक्ट ऑल इन केस ऑफ द आरसीएम? यस 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 सर। डाउट अबाउट इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट पे आता हूँ। इंटरेस्ट 18%, interest 18%, and interest will be only for the day I have utilized the ITC. Interest will be for the day I have used the amount. Interest will be according to section 50. अब interest के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? So I have to, for explaining the interest, I can say a number of the days I have used that ITC.
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 50 में जाना पड़ेगा. So we will discuss at a later on because I have to cover the interest part also. So keep on hold for some time. That interest part we will discuss definitely in third day or fourth day. We will cover this ITC interest part also. But for the time being, what we have understood that in case of the FCM, एक बार मुझे वापस बात करो, एक बार please talk to me. If I am paying the tax and the reverse charge, I can take the ITC only when I am paying the tax to the government. I can say RCM ITC will not be available to the recipient without making the payment. RCM का ITC मैं ले सकता हूं बिना पेमेंट किए हुए? नहीं. FCM की ITC क्या मैं ले सकता हूं बिना पेमेंट किए हुए? यस. यहाँ पेमेंट किसको करना है? सप्लायर को. नहीं किया कितने दिन में? How many days if I not made the payment? Within 180 days. 180 days would be counted from date of invoice. अगर नहीं किया तो मुझे जो आईटीसी मैंने पहले ले लिया था अब मुझे रिवर्स करना पड़ेगा along with इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट? 18%. कब से? We will discuss in the section 50. ठीक है. Is it clear till now? यहां तक क्लियर है सबको? Please confirm, is it clear till now? Is it clear till now? Let me take the question of Vaishali. Composition deal adopted by supplier A in fourth quarter and sales goods 15 lakh and GST applicable. Then he purchased the goods earlier. Vaishali Bindal, you are saying composition scheme adopted by supplier A in fourth quarter and sell the goods 15 lakh. So because if I'm composition dealer, whatever sale I made, I will pay 1% or 5% or 6%. Goods के किसमें 1% है, so I will pay 15,000. And if I am composition dealer, I'm not required to pay actual tax, only 1%. In your example only I'm talking about. And I cannot take the ITC. So I have to pay entire 15,000 in cash. सुशील, अगर मैं, जैसे आपने मुझे टैक्स इनवॉइस इशू किया, अगर मैं आपको 180 दिन में पेमेंट नहीं करता हूं, किसका? पूरे टैक्स इनवॉइस का, तो मुझे आईटीसी तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन मिल जाती है ना. एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन आईटीसी मिल जाती है. सी यू हैव इशूड द टैक्स इनवॉइस टू मी. कितना अमाउंट था? 10,000. कितना जीएसटी था? 500. टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी? 10,500. अगर मैं आपको पे ना भी करूं तो भी कोई इश्यू नहीं है. आई कैन टेक द आईटीसी इन जनवरी टिल 180 डेज, नो प्रॉब्लम. अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया मैंने, 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया, तब मैंने जो आईटीसी ली थी ना जनवरी में, वो मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी. 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट. इफ आई पार्ट पेड, अगर पार्ट पे किया तो पार्ट आईटीसी मिल जाएगा. इफ बी पेड हाफ अमाउंट, हाफ मिल जाएगा बाबे का. प्रोपोर्शनेट भी मिल जाएगा और प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा. पार्ट पेमेंट मिलेगा तो आईटीसी पार्ट पेमेंट पार्ट रिवर्स करनी पड़ेगी. हाँ ऋतुराज, बहुत बढ़िया पॉइंट कहा आपने. ऋतुराज होनमेन हैज गिवन करेक्ट. एफसीएम के केस में सप्लायर हैज टू पे द टैक्स even though he has not received the amount from customer. Interest will be paid to the government. Interest obviously will be paid to the government. Yes sir, clear sir, clear sir. Yes sir, but up to 180 days from the date of invoice, supplier will have to reverse. गजेंद्र, रिसिपिएंट आईटीसी किसने लिया? सप्लायर ने कि रिसिपिएंट ने? आप सप्लायर हैं गजेंद्र, आप सप्लायर है, मैं कस्टमर हूं आपका. ठीक है, आपने मुझे टैक्स इनवॉइस दिया, आपने तो टैक्स गवर्नमेंट को सेम टाइम पे कर दिया, मैंने भी सेम टाइम पर आईटीसी ले ली. पर 180 डेज में अगर अरुण ने गजेंद्र को पेमेंट नहीं किया तो अरुण ने जो आईटीसी ली थी ना वो रिवर्स करनी पड़ेगी. मतलब मैंने जो एडवांटेज लिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा. इसमें देखिए वो कहते हैं ना, दो जन की लड़ाई में तीसरे को बेनिफिट होता है. हम कहते हैं ना, 2 जन की लड़ाई में तीसरा ही बेनिफिट लेता है. यहाँ पे भी रिसिपिएंट और सप्लायर की लड़ाई में गवर्नमेंट बेनिफिट ले रहा है. सोचिए ना एक बार, इस बात को समझिए. हम कहते हैं ना 2 जन की लड़ाई में तीसरा बेनिफिट लेता है. अब देखो यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर की लड़ाई है. इसने इसको पे नहीं किया तो सप्लायर से तो गवर्नमेंट ने पहले दिन ले लिया टैक्स और रिसिपिएंट को 180 दिन के बाद रिवर्स करवा लिया. गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ ना. इसने तो टैक्स ले लिया, इसको भी आईटीसी नहीं दी. गवर्नमेंट हैज गेट द अमाउंट बट स्टिल इसको कहा भाई तू आईटीसी रिवर्स कर और इंटरेस्ट भी दे मेरे को. गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया डे 1 में,
गवर्नमेंट को आईटीसी मिल गया और गवर्नमेंट को बेनिफिट भी नहीं देना पड़ा। इज इट क्लियर? कैन वी अडॉप्ट कंपोजिशन इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? नहीं, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं। सुशील, इंटरेस्ट के रिगार्ड में क्लियर हो गया क्या? एक बार मुझे बताना है। इवन जीएसटी डिपॉजिटेड पर उसके बाद भी रिवर्स करना है अगर रिसिपेंट ने पूरा पेमेंट। हाँ कैसे, आपका वाला बात अभी मैंने करेक्ट ना, ये समझा ना। वो दो बंदर थे कि वो कौन सा थे, वो बचपन में हम कहानी पढ़ते थे ना, दो जन लड़ाई कर रहे हैं, बीच में एक वो आ रहा है, वो फायदा उठा रहा है। नाम नहीं ले रहा हूँ बट आप समझ गए। विच फॉर्म आरसीएम, 5 मिनट, recipient files when he pay tax, which forms RCM recipient file when he pay GSTR-3B? Manish, GSTR-3B. Interest is on invoice value or the GST amount? Invoice interest on the tax, interest हमेशा tax पर लगता है, interest is always tax. दो बिल्ली और एक बंदर, correct. In my point of view, GST should be charged only to unregistered person to ultimate consumer, because there is no point of my यार अब्दुल क्या करें यार, अब तो GST लॉ भी बन गया। हाँ, अभी आयशा ने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा, ये जो रिवर्स हुआ ना, लास्ट पॉइंट समझिए आज की क्लास का। पहले क्लेम किया फिर रिवर्स किया, बिकॉज 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। नाउ 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी बी ए को पेमेंट करेगा, वेन एवर बी मेक द पेमेंट टू ए, बी कैन रिक्लेम दैट आईटीसी। एक वर्ड याद रखना, फर्स्ट टाइम क्लेम के लिए देर इज टाइम। पहली बार जब आईटीसी क्लेम होती है ना, देर इज टाइम लिमिट टू क्लेम द आईटीसी गिवन इन द 16(4). पर रिक्लेम, रिक्लेम कब? जब रिवर्स किया उसको मैं रिक्लेम कर रहा हूं। रिक्लेम के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिक्लेमिंग द आईटीसी। क्लेम, yes, there is a time limit which we will discuss in the next class. Reverse 180 days वाला कॉन्सेप्ट रिवर्स करना है। रिक्लेम नो टाइम लिमिट, मतलब 5 साल बाद में भी अगर मैं पेमेंट करूं बी, किसको? गजेंद्र को, सप्लायर को, तो मैं आईटीसी रिक्लेम कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अब्दुल को क्लियर हो गया। ऐसा वंस पेमेंट इज done later on, reverse ITC claimed again. Yes, 16(4) not done. Yes sir, clear. Hemlata, please explain if tax not paid within 180 days, whether he will reverse ITC availed along with interest. Yes, yes, Hemlata, correct. गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी मिलेगा। यस सर। अनमोल, विच फॉर्म रिसिपेंट GSTR-3B? पूजा, इंटरेस्ट ऑन इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, सिर्फ जीएसटी पे। मयूर सर, इफ द रिसिपेंट हैज टेकन द आईटीसी आफ्टर 1 month, सप्लायर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। मयूर, इन बिटवीन कंपोजिशन नहीं जा सकता, साल खत्म होने के बाद ही जाएगा। रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है, सप्लायर भली रेगुलर है, भली नॉर्मल है, भली अनरजिस्टर्ड हो गया, बट जैसे ही वो पेमेंट करेगा ना, ही इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, देयर इज नो प्रॉब्लम। केशव, केशव का आंसर मैंने कर दिया। आई थिंक ऑल क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड। सो सर, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फिर आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। सर, कितने दिनों में हमने क्लेम मिल जाता है? हाँ तो देखो सर, फर्स्ट सेक्शन, मिसेस सेक्शन, द फर्स्ट टाइम क्लेम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव द टैक्स इनवॉइस, यू सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन, यू कैन क्लेम द आईटीसी इमीडिएटली। 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिक्लेम कब करोगे आप? कभी भी कर सकते हो, जब भी आप पेमेंट करोगे। आज का सेशन बहुत हेवी रहा। अच्छा, ऐसा हेवी रहा? अरे यार, थैंक यू रुद्राज फॉर एप्रिसिएशन। अब्दुल सर, यू आर सो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। मिस्टर ए इज अनरजिस्टर्ड, ही इज सेंडिंग द गुड्स इन वीआरएल टू मिस्टर बी। वीआरएल क्या समझा नहीं मैं यार। ए इज अनरजिस्टर्ड, ही इज सेंडिंग द गुड्स इन वीआरएल टू मिस्टर बी, ही इज आल्सो अनरजिस्टर्ड, देन हु इज लायबल टू पे आरसीएम? दोनों पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम कैसे? सो यार, ये आरसीएम के यार, आरसीएम के चैप्टर देखो, देखो सी, मैं आंसर कर रहा हूं इनको, मोहम्मद हुजैर को। देख मोहम्मद, मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केस में, अगर अनरजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बीच में ट्रांजेक्शन होता ना, उस पे आरसीएम नहीं लगता। 90%, 90%। बट
आई विल गिव यू वन एग्जांपल जहां पे आरसीएम लगेगा। लेट्स से मेरा क्या है, मैं हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक बार एज्यूम करो मैं हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और मैंने कोई ट्रक वाले से सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली, मैं अनरजिस्टर्ड हूं और वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी का सेक्शन 93 along with the notification 13 नंबर वो कहता है कि आई हैव टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरी। आप सेक्शन 24 में देखिए तीसरा आइटम, सेक्शन 24 का तीसरा क्लॉज देखिएगा, वो कहता है आरसीएम के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में मैं क्या हूं, बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं कंपनी हूं, तो मेरे ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है और मैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लूंगा और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टैक्स पे करूंगा। 90% केस में अनरजिस्टर्ड तो अनरजिस्टर्ड की ट्रांजेक्शन को एग्जेम्प्ट किया, बट मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे दिया। ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन जब रिवर्स चार्ज का चैप्टर पढ़ोगे ना तब जाके क्लैरिटी होगी, उसके पहले नहीं होगी बेटा। मयूर, इफ रेसिपिएंट हैज टेकन आईटीसी एंड नॉट, आई थिंक मैंने आंसर दे दिया यार। अविनाश, थैंक यू बेटा। सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड सो इन एफसीएम आल्सो रेसिपिएंट इशूड सेल्फ इनवॉइस। सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, देखो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम तो हो ही नहीं सकता ना। फॉरवर्ड चार्ज कब हो सकता है, सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज कब ऑप्ट कर सकता है, जब वो रजिस्टर्ड है ना। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो एफसीएम कैसे होगा। क्यों बेटा, वैशाली, वैशाली बता, क्लियर है ना बेटा कि एफसीएम मतलब सप्लाई रजिस्टर्ड है और वो टैक्स चार्ज करे, अगर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता ना। आई एंजॉय टुडे सेशन मोर, थैंक यू प्रशांत बेटा। enjoyed a difficult session with you, thanks for making, thank you बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राहुल, अच्छा, थैंक यू बेटा। मजा आ गया, चलो आज बहुत बढ़िया हुआ, ग्रेट लेक्चर, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट क्रिस्टल के लिए मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मुझे भी मजा आया आप लोगों के साथ। लेकिन मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना, आज की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है वो आप नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करना, मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में जो भी पढ़ा है ना, इस वीडियो को आप देख लेना, थैंक्स टू द सीए इंस्टीट्यूट की जो आपको लेक्चर, मतलब सी यू, आप लोगों को सीए इंस्टीट्यूट का एक रेस्पेक्ट तो आपको करना चाहिए, एक बात तो आपको धन्यवाद देनी चाहिए सी इंस्टीट्यूट की। देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर दे रहे हैं, हम जैसे टीचर को पैसा देके, जितना आपसे लेते नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा वो पे करते होंगे प्रोबेबली। मैं अभी क्वांटिफिकेशन नहीं जा रहा हूं, बट यू शुड रेस्पेक्ट द सीए इंस्टीट्यूट आल्सो टू दिस रिगार्ड कि दे आर पेइंग फॉर 1 hour बेसिस, बट दे आर प्रोवाइडिंग द लेक्चर टू यू ऑल द सीए स्टूडेंट। सो फॉर दैट आई रियली रेस्पेक्ट टू द सीए इंस्टीट्यूट एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से मुझे कनेक्ट होने का मौका मिला, ठीक है। तो इस चीज में तो मैं 101% मैं कहता हूं, आज अगर कोई लड़का सीए की पढ़ाई करना चाहता है बिना कुछ पैसा खर्च किए, ही कैन डेफिनेटली डू द सीए। सीए कोर्स की वैल्यू बहुत है, ठीक है। और आज इस क्लासेस के कारण मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई, बिकॉज साधारण से साधारण आदमी भी बिना पैसा खर्च किए पढ़ाई कर सकता है, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो, अगर वो डेडिकेटेड है तो आई कैन बिट ऑन दैट। बट लेक्चर नहीं, मॉक एम्स बहुत कुछ है सर, रियली। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मेरे को एक प्रॉमिस करना आप अपने मन में कि आप नेक्स्ट क्लास में बिना रिवीजन किए नहीं आएंगे, यू विल नॉट कम टू मतलब विदाउट रिवीजिंग दिस चैप्टर वट एवर वी हैव डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। मनीष जी,